Good evening, Srinagar. Good evening, Jammu and Kashmir. Welcome you all to the iconic Bakshi Stadium, Srinagar, where everything is all in readiness for JKPL Edition 3 to kickstart. We have got this iconic venue draped in those magnificent floodlights. We have seen spectators building up in numbers as we head into the inaugural match between Valley Stars Ganderbal and Kanwal Tigers. I welcome you once again to the grand inauguration of JKPL presented by Atwas Retail and Atwas Hyundai. I've got the two captains. Without wasting any time, we will straight go for the coin toss. Valley Stars Ganderbal captain and Kanwal Stars captain as well, and the match referee. The coin will be tossed by the organizer of JKPL, Mr. Maruf Abdullah will spin the coin. Tails is the call from Valley Stars Ganderbal and it is a tail. टॉस आपके पक्ष में गया है, क्या करना चाहेंगे और क्यों? बैटिंग करना चाहेंगे। एनी पर्टिकुलर रीजन क्यों बैट करना चाहेंगे? और इस सरफेस के बारे में जो कि आपने देखा होगा, अभी इसके ऊपर एक मैच खेला गया, तो आपने वो मैच देख के डिसाइड किया होगा कि क्यों आप बैटिंग करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है विकेट बहुत अच्छा है और हम पहले बैटिंग ही करेंगे। टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगी? टीम कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। Go well into the match. I have got the captain of Kanwal Tigers. टॉस आपके पक्ष में नहीं गया, फील्डिंग करनी पड़ेगी अंडर लाइट्स और फिर चेस करना पड़ेगा। कैसा क्या टारगेट रहेगा आपके माइंड में? To be honest, हम भी पहले फील्डिंग ही करते हैं because of the dew factor, because it will be difficult to grip the ball later on. So, but doesn't matter in cricket. On your day, you will be good. Inshallah, we will try to set good target on board. We will try to score more than 150 and try to win the match. What do you make of the surface, the 22 yards on which a match was played? It's a black soil and the ball does grip a bit and the ball does keep a low as well. What do you make of the surface? The surface looks good. I don't think it will make that much impact. But the wicket ball will keep a bit low and it will sink it because of the dew factor. But inshallah we will try to put on a good total and try to defend. What's your team combination for the first match? We have a good combination with Varis Bhaiya leading the squad. We have an international experience player with us. So inshallah that will help us a lot. With you that you have an international icon leading the side and the experience being shared with you, what's the experience in the dugout? A huge impact on the team combination, and with this much experience from domestic to international circuit, it will definitely help us. All the very best go well into the match. So the news from the center in the inaugural match of JKPL Edition 3rd is that the toss has been won by Valley Stars Ganderbal and they are going to give it a crack with a bat in hands.
Hello, hello, mic check. Hello, 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 mic check. Hello, hello. Hello, hello, mic check. Hello, hello, आ रही है? hello, hello, hello. OS Baba on in the very first ball, the first ball disappearing over the bowler's head. The next one carved through point for 4. This is an electrifying start
from Nasir Kumar. Adil Guldan captaining the side. Valley Stars Ganderbal taking on Kanwal Tigers in the very first match of JKPL Edition 3. Bakshi Stadium hosting this year's JKPL. Where's Baba once again? That one was better length, aimed onto the body, no room to play with. And there is a deep square leg on the boundary. Long on in the cow corner region. The two fielders permitted outside the circle for the first 6 overs of the power play. And Kanwal Tigers captain is quite happy to bowl first, because the dew in the second innings will come into play as Parvez Rasool on mid-off gets ready. Next ball, that's gone over mid-wicket. Bye-bye ball. That's a huge six. Shot on a length, and Nasir Kumar was ready to pounce onto that. That's an amazing display of hitting. Clean ball striking from Nasir Kumar, one of the dangerous hitters of the ball. Where's Baba? Once again, not learning the lesson. Dropping it short. Square leg on the boundary. He chooses mid-wicket and gets a gigantic six this time. 2 sixes and a boundary. And this is a start that we know Nasir Kumar getting to every now and then. And he has been castled. That one kept low. He was through the shot early, and Nasir Kumar has to walk back, a dejected walk back to the pavilion. Breakthrough for Kanwal Tigers. And OS Baba, after being hit for 2 sixes and a boundary, strikes gold. One shot too many can lead to your downfall. And that's what happened exactly to Nasir Kumar, who was gutted with himself. Valley Stars Ganderbal, Adil Guldan, Nasir Kumar, Mujibul Haq, Danish Muzaffar, Nadeem Dar is captaining the side, but Adil Guldan was there, who came out for the toss. Nadeem Butt, Tazim Yunus, Junaid Bashir, Javed Jaddu, Irfanul Haq, Sahil Khan, and Musaddiq is going to be the 12th man for Kanwal Tigers. Danish Muzaffar, the new man in. One heck of a talent at number 3. Looks to accumulate runs without going helter-skelter. First over completes. It's 16 for 1. Valley Stars Ganderbal after winning the toss on the first night of JKPL, the 3rd edition. Danish Muzaffar will take some time earlier on, but once he gets going, he is that accumulator of the runs at number 3. Adil Guldan. You always know what kind of an innings he comes up with. Top of the order, field restrictions applying. And Kanwal Tigers have to be wary of him. Ankush Bandral has been thrown the ball. Ankush Bandral was mighty successful in Bijbihara Premier League. Is talking and having a word with Parvez Rasool. Is bringing on that experience, that much needed experience to the side.
वेली स्टार्स गांदरबल की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और 24 रनों पर उनको पहला झटका लग चुका है नासिर कुमार के रूप में। आदिल गुलडान और दानिश मुजफ्फर इस वक्त बीच मैदान में बैटिंग कर रहे हैं। और अगर मैं वेली स्टार्स की बात करूं तो एक अच्छी सोच, दानिश मुजफ्फर को उन्होंने तीसरे नंबर पर भेजा है बैटिंग करने के लिए। टेक्निकली बहुत साउंड ये खिलाड़ी और इन परिस्थितियों में वो चाहेंगे कि एक लंबी पारी खेले वो अपनी टीम के लिए। लेकिन आदिल गुलडान जिस स्टाइल में वो बैटिंग करते हैं उसी स्टाइल में इस वक्त वो बैटिंग कर रहे हैं। केवल 5 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंकुश बंद्राल, इन कंडीशंस में इस खिलाड़ी के सामने बल्लेबाजी करना आसान रहता नहीं है क्योंकि इस पिच के ऊपर ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है और थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी यहां पर करनी पड़ेगी वेली स्टार्स के बल्लेबाजों को, क्योंकि वो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे जैसे ये मैच आगे जाएगा वैसे वैसे मुझे लगता है कि ओस आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद यहां पर दूसरी पार में मैं समझता हूं कि बल्लेबाजी करना और आसान रह सकता है क्योंकि बॉल थोड़ा सा गीला हो जाता है और ग्रिप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर मुझे लगता है कि वेली स्टार्स गांदरबल की टीम को पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे पावर प्ले खत्म हो जाएगा उसके बाद स्पिनर्स और आएंगे गेम में और उसके बाद बल्लेबाजी करना उतना आसान रहेगा नहीं। 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है और आज इनॉग्रल मुकाबला वेली स्टार्स गांदरबल और कंवल टाइगर्स के बीच में शुरू हो चुका है। बहुत बड़ा ये मुकाबला और एक बड़ी सफलता मिल चुकी है उवैस बाबा को। पहली कुछ गेंदों के ऊपर वो थोड़े महंगे साबित हुए थे लेकिन उसके बाद एक अच्छी यॉर्कर और नासिर कुमार की विकेट अगर आप शुरुआती ओवर्स में चढ़काते हैं ना तो इसके बढ़कर क्या किसी भी खिलाड़ी के लिए क्या हो सकता है। उवैस बाबा अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी करने के लिए वो जाने जाते हैं। कदमों का इस्तेमाल किया है दानिश मुजफ्फर ने, कमाल का शॉट और गेंद गई है बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और दानिश मुजफ्फर की अगर मैं बात करूं तो वेली स्टार्स गांदरबल के एक ऐसे खिलाड़ी जो टेक्निकली बहुत ही साउंड बल्लेबाज है और आज के इस मैच में उनको तीसरे नंबर पर भेजा गया और ये अच्छी सोच है। मैं पिछले मैच से भी ये देखना चाह रहा था कि दानिश मुजफ्फर को भेजना चाहिए तीसरे नंबर के लिए क्योंकि तीसरे नंबर पर जो भी बल्लेबाज आते हैं ना बैटिंग करने के लिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर हो चाहे वो हमारे लोकल क्रिकेट में हो, वो टेक्निकली बहुत साउंड बल्लेबाज होते हैं और दानिश मुजफ्फर से बेहतर कोई खिलाड़ी हो नहीं सकता इस टीम में जो तीसरे नंबर पर बैटिंग करे। उवैस बाबा पहले ओवर में बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए थे लेकिन उस महंगे ओवर को आखिर में एक विकेट दिलाई थी अपनी टीम को। लेकिन अब यहां पर मौका है उनके पास, अपना दूसरा ओवर वो कर रहे हैं और यहां पर अगर वो अच्छे टप्पे पे ऊपर गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजों को रोक सकते हैं क्योंकि नई गेंद है और यहां पर उनके पास मौका है, वो गेंद को लहरा सकते हैं, थोड़ा सा स्विंग ढूंढ सकते हैं वो नई गेंद से और आदिल गुलडान की विकेट वो चटका सकते हैं। 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर उवैस बाबा अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं लेकिन इस वक्त एक गेंदबाज की सोच यही होती है पहले नई गेंद से एक अच्छे टप्पे के ऊपर वो गेंदबाजी करे क्योंकि अगर आप ज्यादा गति ढूंढने की कोशिश करते हैं ना वहां पर आप थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं, वहां पर बल्लेबाज को मौका मिलता है हाथ खोलने का और वो सेट होने का। लेकिन उवैस बाबा जब से नासिर कुमार की विकेट उन्होंने चढ़काई ना तब से लेकर अभी तक वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और विकेट टू विकेट गेंदबाजी अभी तक देखने को मिल रही है उनसे। विकेट कीपिंग बिलाल भट्ट कर रहे हैं और बिलाल भट्ट नॉर्थ कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, टेक्निकली बहुत साउंड है। और जब कोई ऐसा खिलाड़ी परवेज रसूल की निगरानी में खेल रहा होता है तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। उवैस बाबा के साथ साथ आज अनुभवी परवेज रसूल को भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बल्ले से भी उनको आज अच्छा योगदान देना पड़ेगा। अगर अच्छा योगदान उनको देना पड़ेगा, अच्छी गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही, ज्यादा रोम नहीं दे रहे हैं। पहले ओवर में हमने देखा था जहां पर उवैस बाबा थोड़ा सा शॉर्ट गेंदे कर रहे थे और पसंद करते हैं नासिर कुमार जो कि शॉर्ट गेंदे पसंद करते हैं, तेज रफ्तार से वो गेंदों को पसंद करते हैं। लेकिन अभी तक अगर मैं इस ओवर में बात करें तो पहली गेंद के ऊपर एक चौका आया था, उसके बाद 2 सिंगल्स, लेकिन एक अच्छी वापसी की है उवैस बाबा ने, अच्छी तेज गति के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जा रही है 4 और रन के लिए।
बहुत ही खूबसूरत शॉट निकला है दानिश मुजफ्फर के बल्ले से। ये दिखाते हो कि टेक्निकली कितने साउंड ये खिलाड़ी है। कमाल का शॉट, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करके गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से निकाल दिया था 4 रनों के लिए। 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, 34 रन बोर्ड पर लगे, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है वैली स्टार्स गांदरबल की टीम। और कंवल टाइगर्स के जो कप्तान जब टॉस टाइम वहां पर बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर हम टॉस जीते तो हम गेंदबाजी करना ही पसंद करते। सिंपल है, क्योंकि जैसे जैसे मैच आगे जाएगा ड्यू आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ग्रिप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्पिनर्स को, गेंदबाज को ग्रिप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि 4वां ओवर जो करेंगे ना वो यहां से मुझे लगता है कि जीशान ज़ुहूर गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, गेंद उनकी टर्न होती है, अच्छा घुमाव उनको मिलता है। और आज के इस मैच में वो चाहेंगे कि अपने पहले ओवर में कुछ झटके यहां पर दिए जाए वैली स्टार्स की टीम को और कम स्कोर तक इस टीम को आज रोका जाए। ऑफिशियल्स की अगर मैं बात करूं तो जावेद दारियाल हमारे कश्मीर के बहुत ही अनुभवी अंपायर, काफी नाम कमाया है उन्होंने अपने। अगर हम कश्मीर क्रिकेट की बात करें और उनका साथ दे रहे आज आरिफ छोटू, जो कि अभी काफी ज्यादा चर्चाओं में, काफी बड़ी बड़ी लीग्स में वो अभी अंपायरिंग कर रहे हैं। 34 फॉर द लॉस ऑफ 1। और जीशान ज़ुहूर गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं, पैड पर गेंद लगी है, अंपायर ने भी हाँ की है और अब जाकर पहली गेंद पर यहां पर सफलता मिल चुकी है जीशान ज़ुहूर को। 4वां ओवर शुरू हो चुका है। फ्रंट फुट पर आकर हल्के से दिशा देना चाह रहे थे आदिल गुलडान, लेकिन गेंद सीधे जाकर पैड्स पर लगी और अंपायर का इशारा आता हुआ आउट का। 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। खराब शुरुआत यहां पर वैली स्टार्स गांदरबल की टीम को मिलती, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए थे। थोड़ा सा गेंद रुक कर आई, बल्ला पहले ऊपर से चला था, गेंद और बल्ले के बीच में बिल्कुल भी संपर्क नहीं हुआ और इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ वैली स्टार्स गांदरबल की टीम को। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहां पर हो रही है कंवल टाइगर्स के गेंदबाजों से। थोड़ा सा ये गति कम दी थी वहां पर जीशान ज़ुहूर ने और गेंद सीधे जाकर पैड्स पर लगी थी। और अब जाकर बल्लेबाज जो आ रहे हैं ना बैटिंग करने के लिए, मुजीबुल हक, जब से वैली स्टार्स गांदरबल की टीम में ये खेले हैं ना तब से लेकर एक अलग मुजीबुल हक हमने देखा है। उनका स्ट्राइक रेट ऊपर रहता है, पावर हिटिंग भी करने लगे हैं। और पिछले साल की अगर मैं बात करूं, जब मैंने मुजीबुल हक पिछले साल तक मैं देख रहा था ना तो उनका जो स्ट्राइक रेट रहता था वो 100-120 के आसपास रहता था। लेकिन जब से वो वैली स्टार्स गांदरबल की टीम में खेल रहे हैं ना तब से लेकर अभी तक उनका जो स्ट्राइक रेट है वो शुरुआती गेंदों में ही 150, 180, 200 के आसपास वो स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हो। लेकिन आज जहां पर ऊपर के 2 बल्लेबाज बड़ी जल्दी आउट हो चुके हैं और यहां से किस तरह से इस इनिंग्स को वो संभालते हैं, किस तरह से इस इनिंग्स को वो आगे लेकर जाएंगे ये देखना पड़ेगा। टेक्निकली एक और ऐसे बल्लेबाज है जो बहुत ही साउंड बल्लेबाज है और इन परिस्थितियों में इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। इस बार पैड पर एक बार फिर से गेंद थी, खूबसूरती के साथ गेंद को फ्लिक कर दिया था मिड विकेट की ओर। इस तरह से पहली गेंद पर खाता यहां पर खुलता हुआ मुजीबुल हक और स्कोर पहुंचता हुआ 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 4वां ओवर भी चल रहा है और मेरे साथ आज जो अंग्रेजी कमेंटेटर यहाँ पर मौजूद है ना, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। पहली बार मैं उनके साथ यहाँ पर कमेंट्री कर रहा हूँ, इरशाद भाई के साथ मैं आज यहाँ पर कमेंट्री कर रहा हूँ। और अभी जो कुछ इसके बाद जो कुछ ओवर्स होंगे ना वो आप इन्हीं की ज़बानी से सुनेंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर जीशान ज़ुहूर बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं और 3 गेंदों में केवल 1 रन खर्चा और 1 सफलता इसको मिल चुकी है। लेकिन गेंदबाजी जिस तरह से हो रही है, ज्यादा तेज वो डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जानते हैं कि पिच थोड़ा सा गीला है अभी। ओह, यहाँ पर एक और सफलता मिल चुकी है जीशान ज़ुहूर को। यही मैं जिक्र कर रहा था कि जब मैं पिच के ऊपर मौजूद था तो मुझे लगा कि पिच थोड़ा सा गीला है, यहाँ पर थोड़ा सा गेंद रुक कर आ रही है, इस वजह से बल्लेबाज को बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही है। Rewards reaped for some. That is an absolute peach. Play at that if you can. And Danish Muzaffar, look at that. It is a left arm orthodox bowler's delight. And Parvez Rasool at mid-off or extra cover would have been a very happy man, because this is what he aspires for, and this is why he has kept him on and on in that
BPL, the tournament which is known throughout the valley, and beat any other team that he plays him for. Parvez Rasool's guidance has reaped rewards, and Zishan Zuhur is training under the guidance of Parvez Rasool at that academy, Bijbehara Cricket Academy, which is at Nilandru Sports Cricket Ground. And Zishan Zuhur is very close to Parvez Rasool, and that is why you see such kind of those dismissals coming to the fore. And that is why he just given away only 3 runs in his first over and kept the batsman quiet. 2 for 1 of the first 4 balls. Valley Stars Ganderbal, after a bright start, they're struggling now. They have lost 3 quick wickets. Adil Guldan, the man who was dismissed in the previous over, and then the latest dismissal coming in the form of the informed Danish Muzaffar. And prior to that, Nasir Kumar came. He played some blistering strokes, a blitzkrieg of an innings, got out for 16 after hitting 2 sixes, and out comes the man of crisis, Nadeem Dar. Nadeem Dar has done the job of resurrection so far, playing for so many teams. And prior to this, he was the captain of Sultan Warriors Baramulla, where he did that resurrection job many a time. Now he has got that job on hands once more. In the 4th over, 35 for 3, Zishan Zuhur. Well built, and he has worked on his skills. The left-arm orthodox bowler has a slip in play. Flights this one up, creams it onto the onside for his first runs. So Nadeem Dar is off strike now. He's off the mark as well. And it brings Mujibul Haq back on strike. Now talking about Mujibul Haq at number 4. One of the accomplished batters in that lineup. Plays spin well and plays fast bowling equally well. End of a brilliant over, a wicket taking over. 2 for 2. Zishan Zuhur has been a revelation so far. And Valley Stars Ganderbal, they need someone to step up and play an innings of some substance to take them out of this trouble. 4 overs done. It's 36 for the loss of 3. It was a belated start to this JKPL Edition 3. Once again, looking at the revelations put on that delivery, it was an unplayable delivery at the end, leaving the right-hander. A delight for a left-arm orthodox spinner. And you can watch on your screens Parvez Rasool as guiding the traffic and putting every cog in the wheel at the right places. Ankush Madaral is kind of a skiddy bowler and pushes the ball through quick. Does not put so many revelations on the ball. Left arm orthodox, once again proving too good for the 2 batters out there in the middle. Ankush is bowling his second. He's gone away for 9 runs so far. And the slip, persistent for the right-hander. Deep square leg and a long off. The 2 men out on the boundary. Valley Stars Ganderbal, they won the toss. And I was quite surprised that they decided to bat first. The ball does remain a bit low. And the spinners have been quite effective. Black soil, plenty of runs in the wicket. But you see every now and then the bowlers, the spinners, coming to the fore and troubling the batters. And it will be quite a toil for the 2 batters. This is the 5th over of the power play, 37 for 3, the 2 umpires. Once again, that one rushed through. Equally well played by Mujibul Haq at the last inner stunt. Extra cover at a catching position. Square leg is out there on the boundary. Long off on the boundary as well. So the protection on both sides of the wicket
because the batters, they don't pick the bowlers, the left arm spinners from the hand. They try to sweep the ball, and that's why there is a deep square leg on the boundary. And sometimes the batters do step out and try to take the bowler on. That's why there is a long off for the left arm spinner, because the ball leaves the right hander, and the batsman trying to play that inside out drive, the lofted drive, might go straight down the throat of the long off fielder. That's why Ankush Bandaral has got those two fielders in position. We have a slight delay as the two umpires, umpire Javed Daryal is having some problems. I think this might be related to the side screen or something like that. Parvez Rasool is making his way out towards the dugout. It will be sorted out in a matter of moments, but we don't know as of now why this delay is there. Coming back to the match, the toss was won by Valley Stars Ganderbal. They decided to bat first. They got off to a flyer in the first 4 balls, and then they lost Nasir Kumar, who was threatening to take every ball and deposit it over the boundary. He had deposited 2 sixes on the bowling of OS Baba. The third umpire is out there in the middle as well, with a couple of water bottles. Parvez Rasool has gone off the field, and there is a slight delay in the middle. Bakshi Stadium, Srinagar, hosting this year's JKPL Edition 3. Ankush Bandral and Zishan Zuhur, the spin introductions after OS Baba bowled those 2 overs first up. Spectators, not in huge numbers, but they have come to witness their heroes, quite sparse in numbers. And if it would have been a Royal Goodwill versus Sultan Warriors match, this stadium would have been an absolute jam-packed stadium. It would have been filled to the brim. But you can just imagine Nadeem Dar having a few words with his counterparts. The 2 umpires are having a word with each other as well. It's 6 minutes past 10 in the evening, and Ankush Bandral so far hasn't got a wicket. He has bowled 1.5 overs, none for 10. And talking about State Sports Live, Khan International Sports, and so everything has been sorted out, and play resumes once again. Driven down the ground, man back on the boundary, finishes the over with a single. 5 overs done. Valley Stars Ganderbal, after winning the toss and batting first, a 37 for the loss of 3 wickets in all sorts of problems. पांच ओवर खत्म हो चुके हैं, 39 रन्स पर 3 इंपॉर्टेंट विकेट गंवाई है वैली स्टार्स गांदरबल की टीम ने, और एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है कंवल टाइगर्स की टीम को, जो वो चाह रहे थे
पहले गेंदबाजी करना। उनके कप्तान का मानना था कि अगर हम भी टॉस जीते तो पहले गेंदबाजी भी हम करते। वो जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी जीशान ज़हूर कर रहे हैं ना, उनके सामने तो लग रहा है कि ये टेस्ट मैच चल रहा है और तीसरा दिन किसी टेस्ट मैच का यहाँ पर चल रहा है। कुछ उस तरह की गेंदबाजी हो रही है। एक ओवर में केवल 2 रन खर्चे हैं और 2 सफलता अभी तक उनको मिल चुकी है। कमाल की गेंदबाजी। और जो इरशाद भाई भी कह रहे थे कि परवेज रसूल की देख रेख में वो अभी क्रिकेट खेल रहे, तो ये तो होना ही है। ये तो दिख ही रहा है उनकी गेंदबाजी में कि बड़ी कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। नदीम डार को आज कप्तान से वाली पारी खेलनी पड़ेगी, बड़ी पारी उनको खेलनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर अपील हो रही है, अपील यहाँ पर की जा रही है। थर्ड अंपायर के लिए मुझे लगता है कि ये डिसीजन रेफर किया गया है। आगे निकले थे जरूर और विकेट कीपर ने बड़ा अच्छा काम किया है विकेटों के पीछे। अब जाकर देखना पड़ेगा कि क्या क्रीज में मौजूद थे या बाहर निकले थे, लेकिन बड़ा जबरदस्त काम किया था विकेट कीपर ने। बहुत ही खूबसूरत विकेट कीपिंग, बिलाल भट्ट विकेट कीपिंग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन गेंदबाजी यहां पर बहुत ही खूबसूरत हो रही है। थोड़ा सा हवा में वो ललचाने का प्रयास, ड्राइव करने पर मजबूर किया था उन्होंने नदीम डार को। अभी चेक किया जा रहा है कि अपनी क्रीज में है या क्रीज से बाहर है। The third umpire is on his job. Anything behind the line is a not out. Foot on the line. Nadeem Dar has to walk back. But he's checking with every angle that's available to him. And this is real problems for Valley Star Ganderbal. He has been declared not out, as there was enough doubt on that. No conclusive evidence. And that's why he has decided in favor of the batter there. But Zishan Zahoor has been unplayable thus far. 2 for 2 in his second over. And this has been some variety on display. 2 slips now. Comes forward, negotiates that one onto the offside safely. Parvez Rasool is on the attack straight away. He believes in Zishan Zahoor. He's got a deep mid-wicket on the boundary. He's got a long off on the boundary to protect those boundaries. This is exceptional leadership qualities on the fore from Parvez Rasool. A single knocked away onto the onside by Nadeem Dar to bring Mujibul Haq back on strike. And this will be interesting. Mujibul Haq is a very good player against spin bowling. And that's why a slip has been removed and Parvez Rasool has gone to a catching cover. Rocks back, that one kept low, somehow manages to swing it to the onside to bring Nadeem Dar back on strike. A wicket at this stage. Well, this will be a disaster for Valley Stars Ganderbal. 41 for 3 with a ball to come in the power play. And now Parvez Rasool comes back into the slips. 2 slips. A catching cover point, and he's on the attack. This time watches it well, plays it away onto the offside. Dot to finish. The power play is done and dusted. 41 for 3, and the power play has definitely belonged to Kanwal Tigers. Some exceptional bowling skills, and they kept Valley Stars Ganderbal batters in check. पावर प्ले को पूरी तरह से अपने नाम किया है कंवल टाइगर्स की टीम ने, आज जिसमें ज़ीशान ज़हूर ने जिस तरह की गेंदबाजी की है ना, वो बहुत ही कड़े सवाल पूछे हैं बल्लेबाजों से। लेकिन ये जोड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहेगी वैली स्टार्स की टीम। एक तरफ से कप्तान नदीम डार और मुजीबुल हक, जो इरशाद भाई भी कह रहे थे कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तेज़ गेंदबाजी को भी ये बहुत अच्छा खेल है, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहेगी अब ये टीम। क्योंकि जब भी खेलते हैं तो एक लंबी इनिंग्स वो खेल लेते हैं और आज के मैच के ऊपर भी उनके ऊपर नज़र रहेगी। वैली स्टार्स गांदरबल के चाहने वालों की नज़र जो इस खिलाड़ी के ऊपर रहेगी कि आज एक लंबी पारी खेल लेनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी भी टूर्नामेंट के, बड़ी टूर्नामेंट के पहले मैच में जाते हैं ना, वहाँ पर आप जीत के साथ जाना चाहते हैं आगे, तो आज इन दोनों बल्लेबाज को अच्छा करना पड़ेगा। अगर इस टीम को एक अच्छे और सम्मानित स्कोर तक पहुँचना है तो मुजीबुल हक और नदीम डार को अच्छी पारियाँ खेलनी पड़ेगी। 42 रन
3 विकेटों के नुकसान पर मुजीबुल हक ने 8 गेंदें खेली और 4 रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। दरकार भी यही है, पिच इस वक्त टाइम मांग रही है बल्लेबाजों से। यहां पर आप आड़े बल्ले के साथ स्ट्रोक खेल नहीं सकते हैं, पूरा समय आपको लेना पड़ेगा, तब जाकर आप एक बड़ी पारी यहां पर खेल सकते हैं। और अंकुश बंद्राल, इस गेंदबाज को मैं जम्मू से देख रहा हूं जहां पर जेकेसीएल चल रहा था, उस टूर्नामेंट में ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट आए थे और इनकी गेंदबाजी, उनकी बल्लेबाजी ये एक अलग लेवल की हमेशा रहती है। अभी तक इस मैच में भी वो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कवर के ऊपर से शॉट जरूर खेला था नदीम डार ने, लेकिन पीछे प्रोडक्शन मौजूद है। केवल एक ही रन यहां पर मिलेगा वेली स्टार्स गांदरबल और नदीम डार को। तीसरा ओवर कर रहे हैं अंकुश बंद्राल, और जिस तरह से जीशान और अंकुश बंद्राल का अभी तक इस्तेमाल किया है, परवेज रसूल ने वो बड़ी कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। अभी तक पावर प्ले में आसान रहता नहीं है किसी भी स्पिनर से गेंदबाजी करवाना, जहां पर केवल 2 खिलाड़ी आप पावर 30 गज के दायरे के बाहर रख सकते हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। केवल 1 रन और मिलेगा, अब जाकर दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं और दूसरा रन भी यहां पर मुकम्मल किया है दोनों खिलाड़ियों ने। मुजीबुल हक को एक बड़ी पारी यहां पर खेलनी पड़ेगी, और मुजीबुल हक से हाल ही में मैंने बातचीत की थी और उनको मैंने कहा था कि आपने जो अपना स्टाइल बदला है, जिस तरह से आप अभी पावर हिटिंग करने लगे हैं, तो उनका यही कहना था कि T20 बहुत ज़्यादा कश्मीर में हो रही है और मुझे अपने खेल को तब्दील ज़रूर करना था, और उन्होंने वो करके दिखाया। और बड़ी ज़बरदस्त पारी अभी तक उन्होंने वेली स्टार्स गांदरबल की टीम के लिए खेली है। ये शॉट अच्छा है, लेकिन पीछे प्रोडक्शन मौजूद है, केवल 1 रन। अच्छी टेक्निक के साथ बल्लेबाजी हो रही है, बैकफुट का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर भी अभी तक गेंदों को देख रहे हैं, सिंगल्स डबल्स के साथ वो मैच को आगे लेकर जा रहे हैं। आपकी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जिसके अंदर वो काबिलियत हो कि वो पूरे 20 ओवर खेले, 10-15वें ओवर तक वो बल्लेबाजी करे और एक छोर पकड़ कर वो बैटिंग करे, और ये काबिलियत है मुजीबुल हक के पास। और दूसरे छोर से उनके कप्तान इस वक्त बैटिंग कर रहे, गैप में गेंद गई है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन 2 रनों से वो नहीं रोक पाएंगे नदीम डार और वेली स्टार्स गांदरबल के इन दोनों खिलाड़ियों को। 7 ओवर खत्म हो चुके हैं, 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और 3 बड़े झटके लग चुके हैं वेली स्टार्स की टीम को। नासिर बशीर ने जिस तरह से शुरुआत दी थी, केवल 5 गेंदों का सामना किया और 16 रन और 2 बहुत बड़े छक्के उनके बल्ले से निकले थे, लेकिन जल्दबाजी आज भी कर बैठे। लगातार जिस स्टाइल में वो बल्लेबाजी करते हैं, हमेशा बड़े शॉट्स के पीछे वो चले जाते हैं और वहां पर कहीं ना कहीं मौका वो देते हैं गेंदबाज को उनको आउट करने का, और आज भी वही किया। एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद एक बड़ी पारी वो खेल नहीं सके और अपनी टीम को मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुश्किलातों में उन्होंने डाला है। अंकुश बंद्राल ने 3 ओवर मुकम्मल किए, 18 रन दिए, सफलता मिली नहीं है लेकिन किफायती गेंदबाजी की है। केवल 6 की औसत से उन्होंने रन खर्चे अपने 3 ओवर्स में, लेकिन दूसरे छोर से जीशान ज़हूर जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, 171 मैचेस का अनुभव, 257 विकेटें अपने T20 कैरियर में अभी तक वो प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी तक जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने अब इस मैच में की है ना, वो बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की। अच्छा, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है मुजीब ने, और इस ओर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी मुजीबुल हक से, जिस तरह से अपने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और गेंद को निकालने में कामयाब हुए हैं 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, हल्का सा गेंद आगे की थी जीशान ने और बड़ा कमाल का कदमों का इस्तेमाल। ये प्रेशर यहां पर रिलीज करेगा, कम करेगा यहां पर मुजीब के ऊपर और नदीम डार के ऊपर, जो पिछले ओवर में दबाव बन रहा था। केवल सिंगल्स के रूप में रन यहां पर मिल रहे थे वेली स्टार्स की टीम को, लेकिन जब एक बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनता है तो उस दबाव को कम करने के लिए आपको बीच बीच में वो जोखिम लेने होते हैं, बड़ी शॉट्स आपको खेल लेने होते हैं, और वही मुजीबुल हक इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद की पिच तक पहुंचकर वो शॉट्स अभी तक खेल रहे हैं। ये चीज अच्छी है, जब गेंद घूम रहा हो, जब अच्छा खासा टर्न यहाँ स्पिनर्स को मिलता है, तब जाकर आपको अपने कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और नदीम डार अभी तक उस फॉर्म में दिखे नहीं है, 12 गेंदें खेली और केवल 7 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं, उस फॉर्म में अभी तक वो दिखे नहीं है। और हमेशा हमने देखा है नदीम डार को 8वें 10वें ओवर के बाद वो आते हैं बैटिंग करने के लिए, और वहां पर ज्यादातर अपनी पावर हिटिंग के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन आज वो दायित्व उनको निभाना पड़ेगा।
जो 3 विकेट ऊपर से जल्दी गिरी है, आज उनको लंबा भी जाना पड़ेगा और बीच बीच में उनको बड़ी शॉट्स भी खेलने पड़ेंगे, और तब जाकर वैली स्टार्स गांदरबल की टीम इस पहले मुकाबले में यहां पर एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है, जहां पर वो एक अच्छी चुनौती पेश कर सकते हैं कंवल टाइगर्स की टीम के ऊपर। 3 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे जीशान ज़हूर, और अभी तक उनके लेखी जोखी की अगर मैं बात करूं तो तीसरा ओवर कर रहे केवल 10 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल किए, और प्रॉपर मुझे लग रहा है कि अभी तक जिस तरह से हम फिरोशा कोटला में मुकाबला देख रहे होते हैं ना, वहां पर जब किसी तीसरे और चौथा दिन जहां पर चल रहा होता है और वहां पर स्पिनर्स के विरुद्ध बल्लेबाजी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और कुछ उसी तरह की गेंदबाजी जीशान ज़हूर और अंकुश बंदराल ने पावर प्ले में की है, और यही वजह है कि 8 ओवर खत्म हो चुके हैं और केवल 55 रन बोर्ड पर लगे हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 55 for 3. Mujibul Haq is playing brilliantly. He's got that craftsman-like approach, playing spin brilliantly. And here comes Parvez Rasool. Now, this will be an interesting move, an interesting battle, as Mujibul Haq time and again has looked to impress Parvez Rasool and look to impress one and all to get into that state team. And once he breaks those barriers, he has started to develop his game, as Asif Bhai correctly mentioned, that he has got that power game and added that power game to his repertoire. That has been quite an impressive build-up to Mujibul Haq's innings as he faces Parvez Rasool's first ball. Push through, flatter, nudge down the ground. This is safe cricket being played at the moment because he knows that his team is in all sorts of problems. He needs to just take them out of that and guide them to safe waters. 56 for 3 in the 9th over. Parvez Rasool to Nadeem Dar. Nadeem Dar has been a mixed bag of an approach against the spinners. The left arm spin of Zishan ज़हूर was struggling. In the first ball, he wasn't up to the mark either. Field being adjusted. Third man is up inside the ring. He goes for a big hoik, plays it all along the ground, straight to the cow corner fielder. Well, the pockets on this ground, there are huge boundaries. The pocket on the onside and offside, huge boundaries. The rest of the boundary dimensions aren't that longer. It's Parvez Rasool once more, flights this one up, drives and drives handsomely, but can't beat the man at cover point. Will be just that single, sense in a wayward throw. And in the last over, saw umpire Javed Daryal talking to Nadeem Dar for running onto the pitch. Time and again resorted to those mischiefs once again, running onto the pitch, and that time it was Javed Daryal going straight up to him and not penalizing him but admonishing him that the next time you run onto the pitch will be penalty against you. Parvez Rasool to Mujibul Haq. Mujibul Haq drives and drives beautifully. Can't beat the man, but he will come back for 2 more runs. He has batted brilliantly. He's played everything onto the merit. 2 to finish Parvez Rasool's first over. Just 6 came off that over. 9 overs done. Total is 61 for 3. Valley Stars Ganderbal scoring a shade below 7 runs an over. Getting to 61, but the way Nasir Kumar started that innings, everyone here thought that this innings is going to take flight right from ball 1 and will end up somewhere around 100 runs in the first 6 overs of the power play. But then wickets in clusters, 3 wickets back to back, and that broke the back of the batting of Valley Stars Ganderbal. It will be a bowling change from the other end.
Umar Farooq has been brought into the attack. Momentarily at least, but now he's taking his cap from umpire Javed Daryal. And it will be Zishan Zahoor to continue. This is the previous delivery, the final delivery, and Mujibul Haq, how well has he batted? Clear intent, he's got those execution of the plans right, and he's knowing what he's doing at the moment. That is more important for from a batter's perspective, and he's been exactly doing that. Umar Farooq momentarily got the ball, but then was taken off, and it will be Zishan Zahoor to finish his quota. So far has bowled incredibly well. 2 for 11 in his 3. Now he's got the protection on the boundary. Mujibul Haq drives. Beg your pardon, Nadeem Dar. Change of helmet for him. No run. It's a dot to start. Catching cover. There is a fielder sweeping on the boundary. A deep cover point. Man at backward point inside the ring. First ball. Second ball. He has had enough. And he has deposited this one over deep mid-wicket. And that's gone for a maximum. Much needed. And Zishan Zahoor troubling him every now and then. Pitched this one on Midland leg. And Nadeem Dar, he was ready for that. He has smashed it into the crowd. A 6, much needed one, takes him to 16. Zishan Zahoor will be under some pump here. Finds the outside edge. And he has been given out. LBW, I think. For a moment, I thought he got that outside edge. Parvez Rasool dropped the ball. He was appealing. And we will have a look on that. Zishan Zahoor gets the revenge instantly. The moment he was hit for 6, the next ball, he dismissed Nadeem Dar, who has to walk back, a dejected walk, a long walk back to the dugout. And Valley Stars Ganderbal have lost their 4th wicket. Spectators not in numbers have come in sparse numbers, and Nadeem Dar is reluctant to go back. Three for 17, and let's have a look. This was that delivery. Yes, hit on the back leg in front of the stumps. That is 9 out of 10 that he will be given out. LBW, Zishan Zahoor. He is bowling a dream spell here at Bakshi Stadium. Under the night sky, amid the lights, he has been a bowler to watch out for. 3.33 for 17. As Nadeem Dar walks back to the hut, Mujibul Haq is still there. Kanwal Stars, they are ruling the roost here. They are on top. 67 for 4 in the 10th over. Going back, playing back onto the delivery, which had to be played onto the front foot. The ball hitting him right in front of the stumps there. Zishan Zahoor pushing that one through and straight up. And umpire Javed Daryal had no hesitation whatsoever. Junaid Butt is the new man in, replacing Nadeem Dar, whose vigil came to an end. Every one of us thought that that 6 that he hit over deep mid-wicket was the start of an innings that will take flight, but it was cut short by some brilliant bowling by Zishan Zahoor. Can he pick up another one? Comes forward, knocks it away onto the onside. Junaid Bashir is a utility all-rounder in this team. He bowls well, he fields brilliantly, and he scores those important runs in that lower middle order. But this time he has a job at number 6. Junaid Bashir
calm and composed, drives it down the ground to pinch a single, is off the mark, and now they are coming back for the second as a result of that missed field. This is what Parvez Rasool in the slips would not have wanted, and this is what would have worried him a lot, because every now and then puts his focus on fielding skills. As a fielder, you have to be on top of your game. That's Parvez Rasool when he gives those tips to the young ones who are around him. And I have heard him many a times saying this, that fielding is a skill that has to be controlled by a fielder or a player. Waits for the ball, then nudges it using the pace of the ball. A single, and once again misfield, but this time the second run was not on. One to finish a brilliant quota of 4 overs, 3 for 19. Zishan Zahoor on a night where it mattered the most. Parvez Rasool threw him the ball and he answered with 3 top order wickets. 70 for 4 Valley Stars. Halfway mark with Mujibul Haq holding the fort at the other end. Runner ball 17, and Junaid Bashir, giving him able company, is batting on 3. मुजीबुल हक को अब यहाँ से लंबा जाना पड़ेगा. 100 के स्ट्राइक रेट से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं. ज़रूरत है इस वक्त वेली स्टार्स की टीम को इस खिलाड़ी का वहां पर रहना. और जो खिलाड़ी अब जाकर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुका है, जुनैद बशीर. और 2000 के दशक में एक जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस रही थी, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की. और जुनैद बशीर को जब भी मैं देखता हूँ, चाहे फील्डिंग, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, और मुझे मोहम्मद कैफ याद आते हैं. मोहम्मद कैफ वो बल्लेबाजी सिर्फ करते थे और फील्डिंग के लिए वो ज़्यादातर जाने जाते, लेकिन ये हरफन बोला खिलाड़ी है. जुनैद बशीर गेंदबाजी भी कर सकते हैं, और तब गेंदबाजी कर सकते हैं जब टीम के ऊपर दबाव होता है. डेथ ओवर्स में ज़्यादातर उनका इस्तेमाल किया जाता है, और अब जाकर उनका जो इस्तेमाल किया गया है वो मिडिल ऑर्डर में किया गया. और आज के मैच में उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी. आज उनको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि वेली स्टार्स गांदरबल की टीम इस वक्त पूरी तरह से दबाव में है. अब उमर फारूक का इस्तेमाल किया जा रहा है. तेज गेंदबाज अब दिखेंगे हमें इस मुकाबले में. सामना करेंगे जुनैद बशीर, जो कि टेक्निकली अच्छे बल्लेबाज है. टाइम लेना पसंद करते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक आप इस बल्लेबाज को रोक नहीं सकते हैं. ज्यादा गेंदे सेट होने के लिए खेलते नहीं है, बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं और उसके बाद शॉट्स खेलना वो पसंद कर लेते हैं. उमर जानते हैं कि स्टार्ट उनको बहुत अच्छा मिल चुका है. स्पिनर्स ने एक अच्छी शुरुआत दिलाई है कंवल टाइगर्स की टीम को, और उस शुरुआत को वो जाया करने नहीं देंगे. अच्छा शॉट खेला है जुनैद ने, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है. केवल एक ही रन से उनको संतुष्ट होना पड़ेगा. स्पिनर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर उमर फारूक का इस्तेमाल किया गया है. एक तेज गेंदबाज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है. शायद अपने तेज गेंदबाजों के जो ओवर्स है ना वो निकालना चाह रहे थे, क्योंकि स्पिनर्स शायद 3 ही खेल रहे हैं कंवल टाइगर्स की टीम में. ये जड़ में डाली हुई गेंद थी. बॉटम हैंड का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं मुजीबुल हक, और रनिंग बिटवीन द विकेट. कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट. आंखों में इशारा किया जुनैद बशीर को, और जुनैद बशीर बहुत ज्यादा फुर्तीले हैं, और ये 2 रन मुकम्मल किए हैं जुनैद और मुजीबुल हक ने. 73 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. परवेज रसूल शॉर्ट कवर पर फील्डिंग कर रहे हैं, और अब तक अपने गेंदबाजों का बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया है. इसी तरह की गेंदबाजी उनको लगातार करनी पड़ेगी, और जितना हो सके उतने कम स्कोर तक रोकना पड़ेगा वेली स्टार्स की टीम को, क्योंकि बाद में जब कंवल टाइगर्स की टीम बैटिंग करने के लिए आएगी तो उनके लिए भी आसान रहेगा नहीं, क्योंकि हमने देखा है अभी तक स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है. अच्छा खासा टर्न प्राप्त हो रहा है स्पिनर्स को, तो आसान रहेगा नहीं. अगर 150 160 तक पहुंचेगी वेली स्टार्स की टीम, तो बाद में चीज करना बड़ा मुश्किल रह सकता है. उमर फारूक अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. एक अच्छा टप्पा उन्होंने पकड़ कर रखा है, और उसी टप्पे के ऊपर वो गेंदबाजी कर रहे हैं. कमाल की गेंदबाजी. उमर, अगर हम जीशान की बात करें तो जीशान ने अपना कोटा खत्म किया है, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने बड़ी कमाल की है. और 3 जो सफलता अब तक मिली है वो उन्हीं को मिली थी. इस बार नजाकत दिखाई है. उस और खिलाड़ी मौजूद है, केवल एक ही रन से उनको संतुष्ट होना पड़ेगा. 73 रन
बल्कि 74 रन बोर्ड पर लगे हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 11 ओवर खत्म हो चुके हैं और टॉस के टाइम ही कहा था कंवल टाइगर्स के कप्तान ने कि अगर हम टॉस जीते तो हम गेंदबाजी करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि जो रात के मुकाबले होते हैं ड्यू आना शुरू होता है और उसके बाद मुजीबुल हक 21 गेंदें खेल चुके और 20 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। और आज मुजीबुल हक को कम से कम यहां पर 20 ओवर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 16-17वें ओवर तक वो बैटिंग अगर करते रहेंगे तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव कम रहेगा और वो आते ही बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। बहुत अच्छी गेंद। परवेज रसूल अपना पहला ओवर करने के बाद उन्होंने हटाया था अपने आप को, लेकिन अब जाकर वो दूसरा ओवर करने के लिए आ चुके हैं। पहले ओवर में 6 रन खर्चे थे, लेकिन विकेट की तलाश रहेगी। जो शुरुआत कंवल टाइगर्स की टीम को मिली है ना, उस शुरुआत को वो इसी तरह से और आगे लेकर जाना चाहेंगे। दबाव पूरी तरह से वो बनाना चाहेंगे वेली स्टार्स गांदरबल के बल्लेबाजों के ऊपर। एक और अच्छी गेंद, शॉट अच्छा खेला जुनैद ने। उस ओवर कोई खिलाड़ी मौजूद है नहीं और गेंद जाएगी मिड विकेट बोर्ड से बाहर 4 रनों के लिए। ये काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। मैंने अभी भी कहा है कि हरफन बोला खिलाड़ी है, गेंदबाजी करना जानते हैं, बल्लेबाजी, और जब टीम मुश्किलातों में होते हैं तब जाकर इस खिलाड़ी का इस्तेमाल मिडिल ऑर्डर में किया जाता है और वहां पर ये खिलाड़ी निराश नहीं करता है अपनी टीम को और अभी तक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। ये शॉट अच्छा खेला है, कलाइम के सहारे गेंद को फ्लिक कर दिया है। खिलाड़ी गेंद को रोकने की कोशिश उन्होंने की है, बहुत अच्छी फील्डिंग। निश्चित तौर पर कुछ रन्स अपनी टीम के लिए बचा है। जो स्कालक पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, कुछ रन्स उन्होंने अपनी टीम के लिए बचाए हैं। 79 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, और ये साझेदारी करके अब धीरे धीरे करके इस इनिंग्स को संभाल रहे हैं। एक तरफ से मुजीब और जुनैद बशीर 7 गेंदें खेलकर 10 रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनको चाहिए कि आज लंबा जाना पड़ेगा क्योंकि टीम मुश्किलातों में है। कम से कम अगर ये 2 बल्लेबाज 15वें ओवर तक जाएंगे बैटिंग करने के लिए, उसके बाद है बल्लेबाजी जो आते ही 150-200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सकते हैं और अपनी टीम का स्कोर 160-170 तक वो लेकर जा सकते हैं। एक और हवाई फायर निकलता हुआ यहां पर जुनैद के बल्ले से, लेकिन आवाज अच्छी आई नहीं थी और पीछे खिलाड़ी मौजूद है और इस तरह से पहली सफलता मिलती हुई परवेज रसूल को। शरीर गेंद के पीछे ठीक तरह से आया नहीं था और वहीं पर लगा था कि आवाज अच्छी आई नहीं है और इस तरह से अब जाकर जुनैद बशीर को Parvez Rasool getting his man Junaid Bashir playing with fire, time and again resorting to those across the line swipes, and that time the ball was both slow through the air and there was a deep mid wicket settling under the ball, juggling in the end but holding on to that, and Parvez Rasool has gone amongst the wickets now. He's got that wicket, the important wicket of Junaid Bashir. Out comes Nadeem Butt, pushes it through, it's down the leg side, it's a wide.
Parvez Rasool has got that mixed bag of tricks. He's got that variety. He can bowl a very lethal Yorker. He's got a good off spinner. And he's got a dusra that troubles the batters every now and then. As far as I have seen him bowling, 12 overs done, 83 for the loss of 5. Umar Farooq to continue. Just 4 of his first over. He's going hard at that ball, not timing it properly the way he would have liked. Nadeem Butt hands that strike back to Mujibul Haq. Now it's up to Mujibul Haq to score runs and protect his wicket till the end as well. Umar Farooq bowls a full toss, cracks it and cracks it beautifully. Bad ball. And no ball check has been sent upstairs. Was that delivery above the waistline? Third umpire is there to check. Can't tell from here, but that was given that whack. It's given a fair whack by Mujibul Haq. Seems quite okay from here. The umpire will make everything sure that it isn't a no ball by any means. From that side-on stance of the batter, it looks like a fair delivery. As the third umpire's signal is a fair delivery. Back of the hand, that's gone up in the air. Fielder falls short of the fielder and goes into the boundary for 4. This time he squirts it off the outside edge. That's well fielded. Might have been a third boundary on the trot for Mujibul Haq at backward point, throwing himself onto the ball and stopping 3 runs for his team. That's brilliant work in the field. Nadeem Butt is on strike now. Umar Farooq. He's got a very good slower ball. Back of the hand slower ball. And so far he has not been able to execute that properly. And he's trying to bowl that slower ball. And more often than not, he has bowled those full tosses. That's why he has gone for 2 boundaries in this over. 2 back-to-back boundaries. Nadeem Butt should fancy his chances. Hitting a big shot. And taking that pressure off his batter at the other end, Mujibul Haq. Pinch a bye as the batter was trying to come out of his crease. Wide signal by the umpire. So there's extra runs. Have taken that score steadily to 94 for the loss of 5 wickets. We are in over number 13. It's Umar Farooq.
Watches the bat, watches the ball underneath his eyes. This is a very good technique and comes back for 2 more runs. He has been quite impressive with the bat in hands, Mujibul Haq. He moves to 30 of 25 as 13 overs have been completed. It's 97 for 5. Well, it's Ganderbal. Parvez Rasool to start his 3rd over. Starts with a dot ball. Nadeem Butt. The intent was right. He was trying to go for a single and bring the informed Mujibul Haq back on strike. This is over number 14. Next ball comes forward. Another dot ball. Parvez Rasool. This is why he is there at the top of the tree. The up-spinning, bowling all-rounder. Boy, he's got those skills. 3 dot balls on the trot. He bowls according to his field. And that's the strength. He's got a lethal yorker as well at the base of the stumps. And he can vary the pace. This one misses everything. Another dot ball. 4 in a row. And Nadeem Butt. He's got absolutely no idea whatsoever. This over has turned out to be an absolute gold dust. This time squirts it off the outside edge. Well fielded. The fielding has been absolutely top-notch in this match for Kanwal Stars. Everyone has thrown himself around and they have taken everything that has come their way and they have fielded. The ground fielding has been awesome so far. Parvez Rasool, just a single of this over so far. This will be the 2nd run of his 3rd as he completes yet another over. 3 overs, 1 for 16. The struggle continues for Valley Stars Ganderbal. They're 98 for 5. दबाव पूरी तरह से वैली स्टार्स गांदरबल के बल्लेबाजों के ऊपर है, लेकिन उस दबाव से निकालने की कोशिश कर रहे हैं मुजीबुल हक, जो कि अभी तक बहुत खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्रंट फुट का इस्तेमाल उन्होंने अच्छा किया है, बैक फुट पर भी कुछ रन उन्होंने निकाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। जो खराब गेंद उनको अभी तक मिली है, उन खराब गेंदों को अच्छे प्रहार किए हैं, अच्छे चौके उनके बल्ले से अभी तक निकल चुके हैं। लेकिन अब यहाँ से ये 6 ओवर उनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि ये सेट है और उनकी आंखें पूरी तरह से जम चुकी है। उनको पता है कि पिच किस तरह से इस वक्त बिहेव कर रही है। तो मुजीबुल हक को ही अब यहाँ से अंतवें ओवर तक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और एक छोर पकड़कर इनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन अंकुश बंदराल को अब दूसरे स्पेल में लाया गया है। अभी तक 3 ओवर में केवल 18 रन खर्चे थे, सफलता मिली नहीं है, लेकिन काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी की है। अगर आप T20s में 6 की औसत से रन खर्चे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंदबाजी बड़ी अच्छी हुई है। लेकिन ये शॉट अच्छा खेला है मुजीबुल हक ने, कमाल का स्वीप और गेंद गई है स्क्वायर लेग बाउंड से बाहर 4 रनों के लिए। बड़ी कमाल की बल्लेबाजी हो रही है मुजीबुल हक से। और जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो पिछले साल से आपने देखा होगा कि बहुत इंप्रूवमेंट की है इस खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी में। पिछले साल से जब आते थे तो उनका स्ट्राइक रेट 120-130 के आसपास होता था और JKPL में मैंने उनके साथ बातचीत की थी। मैंने तो मैच की ट्रॉफी उन्होंने हासिल की, तो उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत काम किया अपनी टेक्निक के ऊपर, पावर हिटिंग के ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो अब जाकर वो परिणाम दिख रहा है। लेकिन ये शॉट देखिए, वाह मुजीबुल हक, गेंद गई है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी। और यही मैं जिक्र कर रहा था कि टेक्निकली बहुत साउंड बल्लेबाजी और जहां पर
परिस्थितियां गेंदबाज को फेवर करती है ना, ये खिलाड़ी वहां पर खड़ा हो जाता है और अपनी टेक्निक के सहारे अच्छे रन अपनी टीम के लिए बना लेता है और 107 रन बोर्ड पर लगे 5 विकेटों के नुकसान पर। कमाल की बैटिंग और अंकुश बंद्राल के ऊपर अब हल्का सा दबाव दिखना शुरू हो गया था क्योंकि 2 गेंदों पर 2 चौके लगे थे, लेकिन ये तेज गेंद डाली है, बचने के लिए गए थे अंकुश बंद्राल। और यही होता है जब आप गेंदबाज के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव बनाते हैं ना, तो गेंदबाज अपनी लाइन लेगत में कहीं ना कहीं वो फिर उनको सोच विचार करना पड़ता है और यही वजह कि थोड़ा सा तेज डाले और बचने के लिए गए हैं अंकुश बंद्राल इस तीसरी गेंद के ऊपर। कमाल की बल्लेबाजी, ये शॉट भी अच्छा खेला है, उस और कोई खिलाड़ी मौजूद है नहीं और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। नदीम बट ने भी पार्टी ज्वाइन की है, अभी तक काफी स्लो गेंद के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये गेंद थोड़ा बाद आगे मिली थी, ड्राइव करने का मौका दिया था अंकुश बंद्राल ने नदीम को और नदीम ने काफी खूबसूरती के साथ गेंद को कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से निकाल दिया था 4 रन के लिए। 1-1-2 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। पारी का 15वां ओवर चल रहा है, लेकिन बल्लेबाजी बड़ी खूबसूरत यहां पर होने लगी है और वेली स्टार्स गांदरबल की टीम अपनी बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती है। टॉप ऑर्डर में जिस तरह से आदिल गुलडान, नासिर कुमार और मिडिल ऑर्डर में हम देखते हैं मुसद्दिक को देखते हैं, नदीम को देखते हैं, मुजीब, और अगर हम आखिरी ओवर्स की बात करें तो जावेद जड्डू भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं और यहां पर आज उनको वो दिखाना पड़ेगा कि हमारे अंदर हमारी टीम में अच्छी बल्लेबाजी है और हम यहां पर 170 तक अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं। वाओ, व्हाट अ शॉट नदीम बट, कमाल की बल्लेबाजी नदीम बट से हो रही और ये ओवर काफी महंगा साबित हुआ है अंकुश बंद्राल का। पहले 2 गेंदों पर 2 चौके आए थे, उसके बाद एक सिंगल और उसके बाद कवर के ऊपर से शॉट लगाया था नदीम बट ने, लेकिन ये शॉट देखिए बहुत ही खूबसूरत ये शॉट और कवर के ऊपर से गेंद गई है 6 रन के लिए और दरकार थी वेली स्टार्स की टीम को इस ओवर की और एक बड़ा ओवर वो तलाश कर रहे थे और 15वां ओवर एक बड़ा ओवर उनके लिए आज को और यहां से मौका है अभी विकेट हाथ में और इन बचे हुए 5 ओवर उसमें ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपनी टीम का स्कोर कम से कम 160-170 तक अगर लेकर जाएंगे तो आसान रहेगा नहीं कंवल टाइगर्स की टीम के लिए, क्योंकि गेंद थोड़ा सा घूम रहा है, स्पिन अच्छा खासा मिल रहा है यहां पर स्पिनर्स को, तो इस रन चेज में फिर बाद में काफी मजा आने वाला है। Couple of good shots, couple of big shots previous over. Is that the momentum that they were in search for? Basit Bashir, one of the renowned lensmen, is around in JKPL this time around as a social media manager, graphic designer, and those beautiful eye-catching graphics that are on your screens and will be on your screens time and again will be brought on to you by none other than the incredible one, Mr. Basit Bashir. Bowling change. Some medium pace of Wajahat onto the 4. First ball is a wide. Way outside the off stump. Mujibul Haq and Nadeem Butt trying to get that momentum back their way. 118 for the loss of 5. How well has Mujibul Haq batted? He's played everything onto the merit. At the moment he has tried to hit a 6, he has hit a 6. Although he hasn't hit a 6 so far, he's hit a boundary. Every time he has tried to hit that ball, he has managed to hit it properly from the meat of his blade. Outside edge, held the outside edge. These are educated edges, and that has gone into the boundary for 4. Not intended, but it will be accepted as far as it gives 4 runs to Nadeem Butt. Held the outside edge, past the wicketkeeper's gloves, into the third man boundary. Short third man had absolutely no chance. And this will be welcome runs for Team VSG. That boundary will give them a lot of confidence. And going into the final burst of those 4 overs, misfield once again. And this is not helping the cause of Kanwal Tigers, who were up and about
everything in the first 13 overs. From a couple of overs, they have started to slip. Once again, down the ground. Will be just the single, this time fielded cleanly. And will bring Mujibul Haq back on strike with 43 of 32. He has been the man for them, the warrior with the bat in hands. And he has played a workman-like innings. He's worked hard for every run that he has scored. Smashes it down the ground. Finds the fielder yet again and comes back for 2 more. This is exceptional running, but has he been found short at the other end, Nadeem Butt? Third umpire once again summoned. He has to look at this and decide whether Nadeem Butt was short of his crease at the non-striker's end. I think he has slipped his bat. I think it has been curtains for him. Four overs to come in the innings. 1, 2, 8 for 5. How far can they go? How many can they get in those 24 legitimate deliveries? Mujibul Haq, 45 of 33. It was quite close at that end. A third umpire deciding and giving their decision in favor of Nadeem Butt, who's 20 of 15. This is turning out to be a very good partnership. It was touch and go on that occasion. But surviving, and OS Baba returns in his third over. First ball comes out of the crease. Will fetch a single in front of the advancing long on fielder. Mujibul Haq on 45 will look to play some shots now. OS Baba has been quite expensive. 1 for 27 in his third. Let's have a look at the field. Deep backward square leg on the boundary. Fine leg inside the ring. Square leg protecting the boundary. The pocket fielder. Wideish long on. A wideish long off. And there is a fielder patrolling the boundary at deep point boundary. This is a clean strike. This is a much needed hit. This has hit the side screen. This is Mujibul Haq at his absolute best. And he has got to a 50 in some style. Take a bow, Mujibul Haq. 34 balls, 51. And that is the first 6 from his bat. And how neat and clean that strike was. Down the ground, out of screws, no half measures. A man to hit a 6, he hit a 6. OS Baba will be under some pump now. Long on, long off, deep square leg. He chooses mid-wicket, he will be in trouble. He's gone, perishes the next ball, and OS Baba takes the revenge. Mujibul Haq cannot believe what he has seen. That was to be hit,
and to be deposited onto the road. Good catch on the boundary. That ball was to be hit. It was hit from the middle of the bat, but then the fielder did absolutely well on the boundary, taking that catch and dismissing what would have been some onslaught from now onwards. A wicket at the right stage for Kanwal Tigers. 135 for 6 in the 17th over. As I've seen, John Mohammad is trying to come out and bat. He is not impressed. He's looking very furious and leaving the field, as the umpires had told him to leave the field. Now he's leaving the field and is looking angry. Mujibul Haq dismissed, and now it will be Irfanul Haq, who has been in some sort of a touch. Scored 71 in the other match during that day game at RPL, Royal Premier League, Pulwama. He was quite brutal with the bat in hands. He's tall, he's lanky. He always tries to hit those big balls. Where's Baba to Irfanul Haq? First ball beats him comprehensively. As OS Baba once more. This time will fetch a single and will be off the mark down towards fine leg. One more ball to come in the third over of OS Baba and the 17th over of the innings of Valley Star Ganderbal. Nadeem Bhatt carves this one away. Will he look to come back for two? Irfanul Haq is quick. This is absolutely brilliant running between the wickets. Two to finish. The 17, 3 more overs to come. Valley Star Ganderbal a 138 for the loss of 6.
Parvez Rasool will bowl that one over in the death. He's come on to bowl. 2 for 36 from his 3. Owais Baba. He was quite expensive as Parvez Rasool to bowl his 4th to Irfanul Haq. That respect straight away from Irfanul Haq. He's a tall man and he has got that protection on the boundary. For Irfanul Haq, he knows that he likes to wind and wheel the willow. There is a deep backward square leg, there is a mid wicket, and there is a long on. On the onside, on the offside, there is a fielder sweeping on the point boundary, and there is a wideish long off. Exceptional scenes at Bakshi Stadium, Srinagar. Next delivery, 3 on the trot. Dot balls, pressure building. Irfanul Haq would be quite clear to send this one out onto the roof of the stadium. Comes out of the crease, hits it up, hits it over, and gets that boundary. This is what I was predicting, and this is what happened exactly. Stepped out, took it on the full, and throw it over the fielder at extra cover. There was no one backing, and that was always going to be a boundary. Ball number 4 of the 18th over to Irfan. Irfan manages to... He was trying to glance it fine. That's wide signal by umpire Javed Daryal. There was no one past fine leg. Fine leg is up inside the ring. All he had to do, get a little bit of bat, and that would have raced away to the boundary. Next ball comes forward, knocks it back. Parvez Rasool in his follow-through picks it up. This is the 4th dot ball of this over, apart from that wide. And now this will be an important delivery. Irfanul Haq will be quite keen to send this one out into the crowd. Comes out of the crease. Gets done in the flight. Manages to get an inside edge to fetch a single to close that over. 18 done. It's 143 for 6. Irfanul Haq. 5 of 7. And I think Irfanul Haq played safely because he knew Parvez Rasool is a dangerous customer. Owais Baba to bowl his 4th. On strike is Irfanul Haq. First ball comes forward, knocks it away onto the offside. Giving strike back to Nadeem Butt. Irfanul Haq has been quite sedate thus far. He's tried to play according to his limitations, not trying to hit everything out of the park. And this has been quite impressive. One of the destructive batters of this era. This is taken on the full, up and over, into the boundary at extra cover for 4. This is much needed boundary for Nadeem Butt and for VSG. And once again, not learning his lessons, bowling full. And that was a half volley that was dealt with by Nadeem Butt. Beautifully done, giving himself some room and managing to hit it over extra cover for 4. Now Parvez Rasool going down at the boundary at extra cover. Long on, long off, deep mid-wicket, deep point and deep extra cover on the boundary. Owais Baba has conceded 41 runs so far from his 3.2 overs. Nadeem Butt 27, he's playing a cameo. Hits it, and that has gone up, and that has gone beyond the boundary, a deep backward square leg. A 6, followed by a boundary, followed by a 6. This is an important cameo from Nadeem Butt.
Once again, trying to follow the batter. Eyes on the ball, flicking it off his hips and finding that maximum once again. Beautiful shot. Not an easy shot to play, but he timed it to perfection and got the desired result. OS Baba, that dream night, giving runs time and again, continues. This time Nadeem Butt comes forward in the air away from the fielder, should look to come back for two. Despite the misfield there at the boundary, the batsmen are restricted to just one and takes the total past 155, 156 for 6. With two more balls to come in this over, and Nadeem Butt, how important a cameo is this has been. 34 of just 20. So far, a boundary and a 6, apart from those singles. 12 runs with two more balls to play. 2 for 48. Irfanul Haq joins the party, but straight down the throat. Deep backward, deep square leg. Easy catch to the fielder at deep square leg. Straight into the mitts. And OS Baba picks up another wicket, but he has given away 48 runs. That was a slower delivery. Irfanul Haq was looking to whip it off the stumps. No power behind the shot. And that's why it has gone straight down the throat of the fielder. Takes an easy catch. Junaid Qazi. Javed Jadoo comes out in the middle. He likes to pack a punch. And he's a man who can wield that willow. Across the line, deep mid-wicket and deep square leg. They are the areas for Javed Jadoo. He was looking to hit this one out of the ground. Does not make a contact. Connects thin air. 19 done. As they fetch a bye of 157 for 7. With 6 more balls to come, Valley Star Ganderbal. अच्छी वापसी की है वेली स्टार्स की टीम ने, क्योंकि एक समय पर लग रहा था कि शायद 120-130 पर ये पारी रुकेगी, लेकिन एक बार फिर से आज मुजीबुल हक ने बड़ी कमाल की पारी खेली, अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उस मुजीबुल हक की मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली और जिसकी वजह से वेली स्टार्स की टीम 157 रनों तक पहुंची है। लेकिन नदीम जो कि अभी काफ़ी देर से बैटिंग कर रहे हैं, आखिरी के 6 गेंदें बची और इन बची हुई 6 गेंदों के ऊपर उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लेनी पड़ेगी और कुछ बड़े प्रहार उनको करने पड़ेंगे उमर फारूक के सामने, जो कि पहले दौर में थोड़े बहुत महंगे साबित हो चुके हैं। 18 रन खर्चे हैं और इस ओवर में देखना पड़ेगा कि जावेद जड्डू और उनके साथी खिलाड़ी नदीम बट किस तरह की बैटिंग करेंगे। अच्छी सोच यहां पर जावेद जड्डू ने दिखाई है, गेंद को आने दिया और सिंगल लेकर यहां पर स्ट्राइक पर लाया है नदीम बट को, जो कि अभी तक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। टॉस जीतकर आज वेली स्टार्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। शुरुआत बहुत खराब हुई थी, लेकिन बीच में जिस तरह से नदीम बट और मुजीबुल हक ने पारियां खेली है ना, उसी की वजह से जो 158 रन बने हैं, एक अच्छी साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हुई थी, लेकिन फिनिश अच्छा करना पड़ेगा
5 गेंदें बची है और बची हुई 5 गेंदों पर कम से कम 10 रन अगर ये टीम और जोड़ जाएगी तो एक अच्छा टोटल हम कह सकते हैं। एक बार फिर से शॉट अच्छा खेला है, पहले रन के लिए तेजी की है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं और जब तक मिड ऑन के खिलाड़ी गेंद को थ्रो करते तब तक दोनों खिलाड़ी ने दौड़कर 2 रन यहां पर मुकम्मल तो किए हैं, लेकिन वहां पर गेंद विकेटों के ऊपर लगी। अब जाकर थर्ड अंपायर की ओर इस डिसीजन को रेफर किया गया है, लेकिन अच्छी सोच यहां पर जावेद जड्डू और नदीम बट से कि जितना हो सके नदीम बट को यहां पर स्ट्राइक पर लाया जाए। थ्रो अच्छा किया था, तेजी के साथ गेंद के ऊपर चढ़े थे, उसके बाद अच्छा थ्रो। नजदीकी मामला हो सकता है, नजदीकी मामला ये हो सकता है और यही वजह कि अंपायर जावेद धारियाल ने इस डिसीजन को थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया था। काफी नजदीकी ये मामला, काफी नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन अब जाकर अंपायर का शायद निर्णय आ चुका है, नॉट आउट का निर्णय आ चुका है यहां पर अंपायर से, क्योंकि खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। कंवल टाइगर्स की टीम, उनको पहले 6 ओवर अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर उनको ये रन चीज पूरा करना है और अगर उनको पहला मुकाबला अपने नाम करना है जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग का, तो उनको बाद में बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अभी भी चेक किया जा रहा है, मुझे लगा था कि शायद वहां पर डिसीजन आ चुका है, अभी भी चेक किया जा रहा है। काफी नजदीकी मामला है ये और मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लेंगे थर्ड अंपायर वहां पर इस डिसीजन को देने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है वेली स्टार्स की टीम के लिए नदीम बट स्ट्राइक पर आ चुके हैं, केवल 20 गेंदों का सामना किया और 34 रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। आउट का इशारा आ चुका है, जावेद जड्डू को वापस जाना पड़ेगा अपने सेट बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाने के लिए। वो कहते हैं ना कि बलिदान दिया है अपने विकेट का। ये सोच अच्छी थी नदीम बट की, लेकिन थोड़ा सा तेजी अगर वो दिखाते तो ये रन यहां पर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि मुकम्मल हो सकता है। उमैर फारूक पहले स्पेल में थोड़े बहुत महंगे साबित हुए थे, लेकिन अब उनके पास मौका है, वो इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और अपना जो लेखा जोखा है 3 ओवर बाद में वो अपने खत्म करेंगे और चाहेंगे कि कुछ अच्छी गेंदबाजी यहां पर की जाए। यॉर्कर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब सेट बल्लेबाज के सामने आप गेंदबाजी करते हैं ना, वहां पर केवल तेज गति के साथ आप बच नहीं सकते हैं, वहां पर आपको बैक ऑफ द हैंड्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, यॉर्कर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर उनको लॉस्ट इस ओवर में बचना है। 158 रन 8 विकेटों के नुकसान पर उमैर फारूक गेंदबाजी करेंगे नदीम बट के लिए। ये गेंद सीधे विकेटों पर लगी और इस तरह से पहली सफलता मिलती हुई उमैर को। बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद डंडे पर लगी है और इस तरह से 9वां झटका लगता हुआ वेली स्टार्स गांदरबल की टीम को। अच्छी गेंदबाजी, ज्यादा गति दी नहीं, थोड़ा सा अपनी उंगलियां फेरी थी आखिरी समय में और यही वजह कि गेंद को पकड़ नहीं पाए। बैक ऑफ द हैंड्स उमैर फारूक ने ये गेंद डाली थी, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए नदीम और गेंद विकेटों पर जाकर लगी और आखिरी जोड़ी अब खेलने जा रही है वेली स्टार्स की टीम के लिए। तज़ीम और साहिल खान उसका साथ देने के लिए आ चुके हैं। 159 रन 9 विकेटों के नुकसान पर 3 गेंदों में अभी तक केवल 1 रन खर्चा है उमैर ने। पहली गेंद पर जहां पर जावेद जड्डू ने पहली गेंद पर सिंगल लिया था और उसके बाद नदीम बट को स्ट्राइक पर लाया था, लेकिन उसके दूसरी गेंद के बाद जावेद जड्डू खुद रन आउट हुए और यहां से अब आखिरी जोड़ी खेल रहे और इस आखिरी जोड़ी को जितना हो सके इन 3 गेंदों के ऊपर उनको रन्स बटोरने पड़ेंगे। अगर वो 5-6 रन यहाँ पर बटोरेंगे तो ये रन्स काम आ सकते हैं। जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे ना, तब ये रन्स उनके लिए काम आ सकते हैं। लेकिन उमैर फारूक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जो पिछली गेंद पर उन्होंने
अच्छी गति में परिवर्तन किया था, वो पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए थे नदीम, और गेंद डंडे पर जाकर लगी थी। मुजीबुल हक ने आज बड़ा इंप्रेस किया है अपनी बल्लेबाजी से, जिस तरह से उन्होंने इन मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली है, अपना टाइम लिया इस पिच के ऊपर, बाद में बड़े शॉट्स भी खेले और अर्धशतक बनाए इस मैच में। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी की है। इस ओवर में अगली बार उमैर शॉट अच्छा खेला है, गेंद जा रही है मिड ऑफ की ओर, पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। अच्छा थ्रो, जी नहीं, 2 रन यहां पर मुकम्मल किए हैं साहिल खान और तहजीम ने। तहजीम के ऊपर आज नजर रहेगी, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी करते और जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलता है वहां पर तहजीम के सामने बल्लेबाजी करना होता है, आसान रहता नहीं है। तो आज उनको अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा वेली स्टार्स की टीम के लिए, क्योंकि ओस गिर चुकी है। ओस अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वहां पर ग्रिप करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इस बार गेंद ऊपर गई है, खिलाड़ी नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरह से वेली स्टार्स गांदरबल की टीम पूरे 20 ओवर भी खेल नहीं पाए और 162 रनों पर ये टीम पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है।
Welcome back, all the viewers, in the run chase of this first match of JKPL. Kanwal Tigers chasing a target of 163 runs in the allotted 20 overs. Qazi Junaid and Adil Hussain are the two openers from Kanwal Tigers. First ball, Irfanul Haq is going to start the proceedings. A first ball chance for a wicket. Dropped down by Irfanul Haq. 163 runs is the target for Kanwal Tigers Cricket Club. And the two openers from their side, Qazi Junaid, the left-handed elegant batsman. And on the other end, it's Adil Hussain. Irfanul Haq, he has got that pace, accuracy, and a good line and length. Irfanul Haq, they need to strike early. Valley strikers Ganderbal. Second ball of the first over. Qazi to face Irfanul Haq. Keeping the due factor in the mind. 163 runs on the board. I feel that the game is in the favor of Kanwal Tigers, keeping the due factor in the mind. But at the same time, if you take wickets early in the power play, that will be very helpful for Valley strikers Ganderbal. You need to strike early as possible. And for that thing, the best man is Irfanul Haq. Take a wicket in the first over. Qazi Junaid on strike once again. Good delivery again into the gap. That's beautifully played. Magnificent timing. First boundary. Off the mark, Qazi Junaid with an elegant drive. 4 runs. And that's a good start for Qazi Junaid. He should take his time here because the target is not that much. And the ground dimensions are not that much large if we talk about the square boundaries. So you need to get set on the crease. Now the fielder has been put on the boundary line through that cover area for the left-handed batsman Qazi Junaid. Third ball of the first over. This time better length. And I would like to ask my fellow commentator, how will the dew play a crucial factor in this game? 163 runs on the board, not that much I feel. Keeping the T20 game in mind, it should be an easy chase for Kanwal Tigers or not? हाँ जी, ऐसे तो लग रहा है कि 163 रन बनाना यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कंवल टाइगर्स की टीम के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ओवर्स यहाँ पर बीतते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा बहुत मुझे लगता है कि गेंद पूरा ये गीला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओस अच्छी खासी पड़ी है ग्राउंड में, तो उसके बाद ग्रिप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा गेंदबाजों को। और यही वजह है कि यहाँ पर अर्ली झटके, बहुत जल्दी झटके यहाँ पर देने पड़ेंगे, लेकिन इरफानुल हक ने यहाँ पर हमारी शायद सुन ली है, बल्ले का बाहरी किनारा छुआ है इस गेंद ने और गेंद गई है विकेट कीपर के दस्तान में। और इस तरह से कंवल टाइगर्स की टीम को लगने वाला ये पहला झटका। और अगर वेरी स्टार्स गांधरबल की टीम को ये 163 रन डिफेंड करने, तो उनको पहले 6 ओवर में विकेट चटकानी पड़ेगी, 2-3 विकेट उनको चटकानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि उनको बड़ी जल्दी अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये ग्राउंड की ओर ये गेंद जाएगी, जितना ये गेंद गीला होता जाएगा, उसके बाद उनके स्पिनर्स को ग्रिप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इरफानुल हक हमेशा अपनी एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। ओ, बहुत ही खूबसूरत ये गेंद थी, आउट स्विंग यहां पर देखने को मिली है। और
कमाल की गेंदबाजी इरफानुल हक से, और जिस तरह से वो नई गेंद का इस्तेमाल करते हैं ना, आसान रहेगा नहीं। ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, और पिछली गेंद जो थी वो बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, और वहां पर एक अच्छे बल्लेबाज की विकेट उन्होंने चटका। ये 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर बारी का पहला ओवर चल रहा है, और वेली स्टार्स गांदरबल की टीम एक समय पर लग रहा था कि ये टीम आज केवल 120 130 रन शायद बना पाएगी, लेकिन मुजीबुल हक ने जिस तरह की पारी आज खेली है ना, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी उन्होंने की है एक ऐसे समय पर जहां पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रहा था, और वहां पर उन्होंने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया। खराब गेंदों पर उन्होंने प्रहार भी किए, लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो बड़ी खूबसूरत बल्लेबाजी आज उन्होंने की है, जिसकी वजह से 163 रन बनाए थे आज वेली स्टार्स गांदरबल की टीम ने। लेकिन पौंडीचेरी से जब से इरफानुल हक आए हैं ना, तब से कुछ अलग वो दिखे हैं। वहां पर गेंदबाजी भी अच्छी की है, बल्लेबाजी में भी उन्होंने वहां पर रन्स बनाए, तो वो चीजें दिखने लगी है। जेकेसीएल में जब मैं कमेंट्री कर रहा था तो वहां पर सारे गेंदबाज महंगे साबित हो रहे थे, लेकिन यहां पर जेकेपीएल में पहला ही मुकाबला खेल रहे और बड़ी कमाल की गेंदबाजी अब तक वो कर रहे हैं। एक ओवर खत्म हो चुका है, 4 रन यहाँ पर बोर्ड पर लगे 1 विकेट के नुकसान पर। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से हमने पहली पारी में देखा है कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद यहाँ पर मिल रही थी, जीशान को, परवेज रसूल को यहाँ पर मदद मिली है, तो वेली स्टार्स गांदरबल की टीम क्या सोच रही होगी? क्या वो जल्दी यहाँ पर अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल करेंगे, या इसी तरह से इरफानुल हक के साथ किसी तेज गेंदबाज के साथ वो जाएंगे और इसी तरह से वो ओवर्स करते रहेंगे? Yeah, definitely. We're talking about Irfanul Haq. He has got that accuracy, that accurate line and length, and that helped him in taking that wicket off Qazi Junaid. But the new batsman out there in the center, it's Asif Ramzan, another elegant left-handed batsman hailing from Pampur area of Kashmir. And he has got a great technique. When we talk about Asif Ramzan, he is very technically sound. They need to build a partnership from here because the target is not that much. And coming back to your question, spinners will play an important role. You need to bring on spinners as soon as possible. If you are going to take some wickets early in the power play, that will be very helpful for VST Valley Stars Ganderbal. But this man Adil Kohli, he can smash the ball very hard and he likes pace. Sahil Khan into the attack. Second over of the chase. Good delivery, this one. Cramping the batsman in. Adil Kohli off the mark with a single. Adil Hussain. And now he'll bring on strike Asif Ramzan. Asif Ramzan so far he has faced 2 deliveries in the previous over. Unable to touch anyone. But Kanwal Tigers Cricket Club, they have got hopes with this man, Asif Ramzan. He's a man of crisis for them. And today he needs to deliver in this opening encounter of Jammu and Kashmir Premier League against Valley Stars Ganderbal. Sahil Khan on the other end. He has got some serious pace. But he needs to be accurate with his line and length. Likewise, let's work it towards the onside. It's basically a wide down the legs. Umpire Javed Daryal opening up his arms there. A white signal. They are missing his length and line as well. He needs to check his line and length, because if you're going to ball a bad delivery to Asif Ramzan, he'll surely punish you. Do not let any batsman settle on the crease. You need to take wickets as soon as possible, because the runs on the board are not that much, I feel. Because the dew factor is gonna play the role here. The Bakshi Stadium, Srinagar today. The opening encounter of Jammu and Kashmir Premier League. Power play is gonna be the key here. If Valley Stars Ganderbal take 2 or 3 wickets here early in the power play, they are well in this game. But if these 2 batsmen survive the power play and score some runs here, decent runs in the power play, 40 to 50 runs, and I feel like this game is gonna go with Kanwal Tigers overthrow, but no run at all. What do you think, Mr. Fellow Commentator? अच्छा, जब आपको 163 रन ही डिफेंड करने होते हो तो आपको पहले 6 ओवर्स में एक गुच्छे में विकेटें चाहिए। 2-3 विकेटें अगर ये टीम ले लेती है तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर वो हल्का सा दबाव बना सकते हैं।
इरफान उल हक वो काम कर चुके हैं, पहले ही ओवर में उन्होंने एक बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम को। लेकिन आसिफ रमजान का रोल मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा, क्योंकि जब भी तीसरे नंबर पर आते हैं बैटिंग करने के लिए तो इनका जो रोल होता है ना वो कुछ अलग होता है। और आज भी मैं समझता हूँ कि उनको अपना टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ज्यादा रन उनको बनाने नहीं है, लेकिन यहाँ पर गैप तलाश किया है और गेंद गई है 4 रनों के लिए। आसिफ रमजान का खाता भी खुलता हुआ इस चौके की मदद के साथ और स्कोर पहुंचता हुआ 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और आसिफ रमजान के बारे में मैं कह रहा था कि टेक्निकली बहुत ही साउंड खिलाड़ी है और यहाँ पर एक अलग रोल उनको दिया गया है। परवेज रसूल के साथ जरूर उनकी बातचीत हुई होगी और यही कहा गया होगा कि जिस तरह से आज मुजीबुल हक ने एक छोर पकड़कर बल्लेबाजी की थी ना, कुछ उसी अंदाज में यहाँ पर आसिफ रमजान को भी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा रन्स का वो पीछा नहीं कर रहे, केवल 163 रन बनाने हैं। अगर एक साझेदारी यहां से तीसरे विकेट के ऊपर बनती है आदिल कोहली और आसिफ रमजान के बीच में, तो ज्यादा फिर दिक्कतें पैदा नहीं होगी इस टीम के लिए इस रन चेज में। साहिल खान गेंदबाजी तो वो हमेशा अच्छी करते हैं, एक अच्छा उछाल और एक अच्छा स्विंग मिलता है उनको नई गेंद से। लेकिन मुझे लगता है कि नदीम डार को यहाँ पर जावेद जड्डू का जितना हो सके उतनी जल्दी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पहली इनिंग्स के बाद जावेद जड्डू के साथ मेरी बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि गेंद थोड़ा सा नीचे रह रहा है, थोड़ा सा फंस कर हल्का सा आ रहा है, क्योंकि इस पिच के ऊपर ये पहला ही मुकाबला चल रहा है। तो जितना हो सके जावेद और तहजीम का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ा बहुत मुश्किलें जितनी हो सके उतनी जल्दी उनको बनानी पड़ेगी कंवल टाइगर्स की टीम के लिए। साहिल अच्छा शॉट खेला यहाँ पर आसिफ रमजान ने, लेकिन ताकत झोंक नहीं पाए थे, केवल टाइमिंग के सहारे गेंद को दिशा दिखाई थी शॉर्ट कवर की और केवल 1 रन। और इस तरह से 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, 11 रन बोर्ड पर लगे हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेरी स्टार्स गांदरबल की टीम ने 163 रन बनाए थे, जिसमें मुजीबुल हक के बल्ले से आज कल्लास दिखा है, टेक्निक दिखी है, वो हर एक चीज जो एक प्रॉपर बल्लेबाज के बल्ले से दिखनी चाहिए ना, वो आज मुजीबुल हक के बल्ले से देखने को मिली है। Definitely, you were talking about those spinners, whether it's Javed or it's Tazim Tak. You have got 2 important left arm spinners in your team, and you need to make well use of those spinners. But spinners here in the power play, I feel it will be a gamble against a left-handed batsman, a left-handed orthodox spinner against a left-handed batsman. It will always be a gamble, either a wicket or a big hit, nothing in between. Irfanul Haq back into the attack. Good delivery again. Pace on. And having a chat with the batsman through the eyes. Irfanul Haq is very accurate. And as we were talking about, that he was in Pondicherry after coming back, he's through the skies. He's bowling like a blazing gun. All guns blazing. That's what we call it in our language. Irfanul Haq is very tall. That height is helping him. The release point of his delivery is way too good. And also when you look at his follow through, it can't be better than that. Asif Ramzan once again on strike. Again beats him up on the outside edge. He needs to be very clever. Asif Ramzan, do not nick it. Just take your time. Have a chat with your batsman on the other end. Adil Hussain. Just negotiate with the situation at this point of time. Because Irfanul Haq, he is in the form of his life. And Asif Ramzan should understand the situation of his team right now. You don't need to go for the big hits. You just need to negotiate with the situation, bat according to the situation, and then you can do wonders for your team. Asif Ramzan, although he's very technically correct, but when the bowler is like Irfanul Haq, you need to be extra careful. Third delivery of this over. Good looking shot this time. 2 runs. They're coming back for the second. That's good running between the wickets. That's what I was talking about. Do not play any kind of rash shot. What we see in these kind of situations, the batsman gets frustrated when he gets beat all over again and again, and he tries to play some big shot, and in that process he loses his wicket. But you need to keep your calm
You need to keep your cool. Need to be very skillful and compact in this type of situation. Just negate with it, and then you can score some runs. You have got 3 more overs after this one in the power play. You can target all the other bowlers, but don't let your ego win this battle. If the bowler is doing something good, let him do it. So let's be very calm at this point of time. They're having some sort of issues, I guess. Irfanul Haq. If we talk about both these squads, both equally look very balanced. One side, Kanwal Tigers, they have got a bunch of experience. When we talk about Parvez Rasool, when we talk about Asif Ramzan, when we talk about Qazi Junaid, and all the other experienced campaigners are there. And on the other end, you see Nadeem Butt, you see Adil, you see Nadeem Dar, you see Tazim Tak, you see Javed Jaddu. Valley Stars Ganderbal against Kanwal Tigers Cricket Club. The one club belonging to South Kashmir and one club belonging to Central Kashmir. And they are having the encounter here right at the Bakshi Stadium, Srinagar. They are having some issues with the side screen, I guess. And I would like to congratulate the management here. They are doing a wonderful job. They are on the toes. And I'll also like to appreciate the continuous efforts of our umpires. They are the unsung heroes. Whether we talk about Mr. Javed Daryal or Mr. Arif, was also hailing from our side, South Kashmir. Very professionally correct umpires. Some issues going on right now. I think it has been sorted now. Kanwal Tigers Cricket Club, I still feel that they have got the chance to win this game because 163, whether you talk about any format today, in T20 format, it's compared to nothing. 163. You just need to keep wickets in hand. That is the key here. Then you can go berserk. You can go all guns blazing against all the other bowlers. Let the dew come in play. Let the bowlers get slightly soft. Then you can do something out of the box. And the first game of the tournament is always an important game. You get that psychological advantage of winning the first game and moving ahead in the tournament. That gives you some sort of satisfaction and your confidence just gets higher and higher. Irfanul Haq once again. The game resumes. Good delivery outside edge and taken. That's what I was talking about. Don't try to play any kind of rash shot. He tries to play that drive. And outside edge, no mistake there by the wicket keeper, Nadeem Butt. It's the second one down. And now they are looking in shambles. Kanwal Tigers. जिस तरह से हम टेस्ट मैच लाइन जिसे हम कहते हैं ना, कुछ उस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर इरफानुल हक से देखने को मिल रही है. ड्राइव करने के लिए मजबूर किया आसिफ रमजान को. वाह, क्या गेंदबाजी हो रही है. आज तो पूरा दिन तेज गेंदबाजों का रहा है. सुबह से जब आज बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही थी तो स्टार्क, हैजलवुड और पैट का तूफान हमने देखा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वापसी की है बांग्लादेश के गेंदबाजों ने ना, वो तो बहुत ही खूबसूरत थी. और उसी तरह की गेंदबाजी अभी तक इरफानुल हक इस पहले मुकाबले में कर रहे हैं. अपना दूसरा ओवर कर रहे, केवल 6 रन खर्चे और 2 सफलता अभी तक इरफानुल हक को मिल चुकी है. अब समूह का मैं स्वागत करना चाहूंगा जितने भी दर्शक हमारे साथ इस मुकाबले को ऑनलाइन कर बैठे देख रहे हैं ना. मैं आपके नाम यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक खूबसूरत कांटे का मुकाबला ये दोनों टीमों के बीच में चल रहा है. और आदिल हुसैन के नाम से उनको जाना जाता है और एक ही गेंद उन्होंने अभी तक खेली और 1 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं. बड़ा कमाल का ये मुकाबला. 163 रन बनाए थे वेली स्टार्स की टीम ने, लेकिन जिस तरह से तूफानी गेंदबाजी अभी तक इरफानुल हक कर रहे हैं ना, बचना पड़ेगा यहाँ पर. शुरुआती ओवर्स में नई गेंद से बचना पड़ेगा कंवल टाइगर्स की टीम को. अगर इसी तरह से वो विकेट गंवाते रहेंगे ना तो मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आएगा और उसके बाद उस दबाव से फिर ये शायद ये टीम निकल नहीं पाएगी. लेकिन परवेज रसूल है इस टीम में और परवेज रसूल मुझे लगता है कि इन
मुश्किल परिस्थितियों में जहां पर कंडीशंस इस वक्त फेवर कर रही है गेंदबाज को, वहां पर मुझे लगता है कि परवेज रसूल को आना चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए। बिलाल भट्ट नॉर्थ कश्मीर से खिलाड़ी ताल्लुक रखता है, और जहां कहीं पर भी मैंने इस खिलाड़ी को बल्लेबाजी करते हुए देखा है ना, इस खिलाड़ी ने सबको इंप्रेस किया है, मुझे भी। और हर एक जो क्रिकेट लवर है ना, जो क्रिकेट की के और दिलचस्पी रखता है ना, जिस किसी ने भी अभी तक बिलाल भट्ट को देखा है ना बल्लेबाजी करते हुए, वो इंप्रेस हुआ होगा जरूर इस बल्लेबाज से, क्योंकि हर शॉट है इस खिलाड़ी के पास, पुल, ड्राइव, कट, और अपना टाइम लेकर हमेशा बल्लेबाजी करते हैं और काफी खूबसूरत दिखते हैं। जब भी बल्लेबाजी करते हैं ना तब बहुत खूबसूरत दिखते हैं और काफी आनंद आता है उनकी बल्लेबाजी देखने में। लेकिन इस वक्त टीम मुश्किलातों में और इन मुश्किल परिस्थितियों में उनको आज एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। यहाँ पर हल्का सा ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद थी, गेंद को दिशा दिखाई है आदिल ने, उस ओर बहुत अच्छी फील्डिंग की है बैक फॉर अ पॉइंट के खिलाड़ी ने, और निश्चित तौर पर उन्होंने कुछ रन अपनी टीम के लिए यहां पर बचाए हैं। गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया था आदिल ने, गेंद अच्छी थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, बल्ले का बाहरी किनारा छुआ था। लेकिन वहां पर फील्डिंग बहुत ही खूबसूरत की है, और ये रन्स बचाने पड़ेंगे वेरी स्टार्स की टीम को अगर इस पहले मुकाबले में जीत हासिल करने है, तो एक एक रन्स उनको बचाना पड़ेगा। थर्ड अंपायर के लिए अब ये जो फील्डिंग वहां पर की थी, क्या कुछ हिस्सा बॉडी का वहां पर लगा था बाउंड्री रूप्स को, ये देखा जा रहा है। लेकिन अब जाकर इशारा आ चुका है थर्ड अंपायर से कि 4 रन यहां पर मिलेंगे आदिल और कंवल टाइगर्स की टीम को। 14 बोर्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का तीसरा ओवर अभी चल रहा है। और बिलाल भट्ट के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, बिलाल भट्ट जब भी शॉट्स खेलते हैं ना तब काफी आनंद आता है उनकी बल्लेबाजी देखने में, क्योंकि एक ऐसे बल्लेबाज है जो मिडल ऑफ द बैट शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं, उनमें के पास बहुत काबिलियत है। तो बिलाल भट्ट के बारे में मैं जिक्र कर रहा था, बिलाल भट्ट टेक्निकली बहुत साउंड है और हर शॉट है इस खिलाड़ी के पास, लेकिन इन मुश्किल परिस्थितियों में आज मौका हीरो बनेगा, क्योंकि परवेज रसूल की टीम के साथ वो खेल रहे हैं और इनको निकालने का वो काम जरूर करेंगे। और आज के मैच में अगर उनको हीरो बनना है, अगर उनको आज अपनी टीम को जितवाना, तो इनको आज अलग तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि इरफानुल हक जिस तरह की गेंदबाजी वो कर रहे हैं अपनी गेंदों से, उन्होंने अभी तक तूफान मचाया है, क्योंकि बहुत सारी आउट स्विंगर गेंदें अभी तक उनकी ओर से देखने को मिली और वहां पर बल्लेबाज को उन्होंने बड़ी मुश्किलातों में डाला है। और मैं जिक्र कर रहा था आज सुबह से ही, जब से यहां पर अपील हो रही है और अब जाकर अंपायर का इशारा आता हुआ आउट का, बहुत बड़ी विकेट मिल चुकी है साहिल खान को। बिलाल भट्ट निराश कदमों के साथ वो डगआउट की ओर जा रहे हैं, और मैं यहां पर चर्चा थोड़ी बहुत जारी रखना चाहूंगा। आज सुबह से तेज गेंदबाज का दिन रहा है, जब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में पहला आज जो दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ था, वहां पर स्टार्क का तूफान हमने देखा था, पैट और तमाम जो सारे तेज गेंदबाज
In at 5 comes the international cricketer of Jammu and Kashmir, Parvez Rasool, walks in for his team, Kanwal Tigers Cricket Club. And it's the important phase of game. Experience will count here. And it's none other than Parvez Rasool on the crease. Your team is struggling. Your team is sinking. You need to help your team. You need to get them out of this trouble. And you can't get better than that. Parvez Rasool in at number 5, changing his batting position. Actually, he bats at number 4. But today for his team, Kanwal Tigers, he's coming a bit late. But better late than never. Parvez Rasool in at number 5. And Sahil Khan is bowling a superb spell. Getting a wicket in this over, conceding only 7 so far in his 1.4 over quota. He is facing Parvez Rasool. And off the mark, Parvez Rasool with a single. The score moves to 19 for the loss of 3 wickets. Kanwal Tigers Cricket Club, they are in some sort of trouble right now, losing 3 important wickets in the power play. But they need to be very accurate from here. They need to do the right task, the right job from here. Adil Hussain is batting on 5. He has faced only 2 deliveries so far. He hasn't got much strike. Flick it away. That's beautiful shot. And they will get a single over here again. And with that, the 4th over comes to close. 20 for the loss of 3 wickets. Kanwal Tigers Cricket Club. Parvez Rasool, very crucial phase of the game. In at number 5, he needs to build a partnership from here. 163, still not much target, but wickets in hand will be the key here. हाँ जी हाँ, अगर हम वेरी स्टार्स की बात करें तो पूरी तरह से मैच में उन्होंने वापसी की है। जिस तरह से हम पहली पारी में भी जिक्र कर रहे थे कि ओस आएगी और उसके कारण यहाँ पर बल्लेबाजी करना आसान रहेगा, लेकिन अब जाकर 4 ओवर यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और ज्यादा शॉट्स भी खेले नहीं है अभी तक कंवल टाइगर्स की टीम ने, और ज्यादा गीली गेंद नहीं हुई है, और इस वजह से मुझे लगता है कि ये ओवर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इरफानुल हक ने अभी तक 2 ओवर में 11 रन खर्चे, लेकिन 2 बड़ी सफलताएं अभी तक इस खिलाड़ी को मिल चुकी है और इस ओवर में काफी मजा आने वाला है। कोशिश वो करेंगे यहाँ पर एक और झटका देने की कंवल टाइगर्स की टीम को। ये गेंद शॉट थी, ऊपर गेंद गई है, उस ओर सारे खिलाड़ी देखते रह गए और गेंद गई है स्टेडियम से बाहर 6 रनों के लिए। आदिल कोहली इस खिलाड़ी को कहते हैं और शॉर्ट गेंद देखते ही ये खिलाड़ी फिर रुकता नहीं है, काफी दूर ये गेंद जाएगी और आधा दर्जन रन मिलता हुआ आदिल और कंवल टाइगर्स की टीम को ये थोड़ा बहुत रिलीफ देगा कंवल टाइगर्स की टीम को, क्योंकि दबाव इस टीम के ऊपर लगातार बन रहा था। और अभी जो मेरे सहयोगी यहां पर जिक्र कर रहे थे कि पेस को पसंद करते हैं और पेस जैसे यहां पर दिए और इरफानुल हक ने टूट पड़े इस गेंद के ऊपर और 6 रन यहां पर मिलते हुए, ये रन्स बड़े इंपॉर्टेंट थे इस वक्त कंवल टाइगर्स की टीम के लिए, क्योंकि अभी तक आज जिस तरह से इरफानुल हक का स्पेल रहा है ना, खासकर पहले 2 ओवर लगातार उनकी गेंदबाजों में हरकत देखने को मिली है, आउट स्विंग लगातार उनकी गेंदबाजों में देखने को मिली है। इरफानुल हक की पहले गेंद पर एक बड़ा छक्का निकलता हुआ आदिल के बल्ले से। आदिल कोहली, कुछ बड़ी पारियां मैंने इस खिलाड़ी के बल्ले से देखी है और खासकर SNW में मैं मैच देख रहा था, उस समय मैं कमेंट्री नहीं करता था, लेकिन वहां पर जिस तरह की पारी इस खिलाड़ी ने खेली थी ना, वो मुझे अभी भी याद है। और अगर ये खिलाड़ी 2-4 ओवर या अगर यहाँ से टिक गया ना, तो इस खिलाड़ी को बाद में रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इरफानुल हक इसी कोशिश में है कि इस खिलाड़ी की विकेट यहां पर चटकाई जाए, लेकिन तेज गेंदबाजी पसंद है
पेस काफ़ी पसंद है आदिल कोहली को, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि यॉर्कर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इरफानुल हक, क्योंकि जब भी यॉर्कर्स इरफानुल हक से देखने को मिलती है ना, वो सटीक होती है और वहां पर वो परेशान कर सकते हैं आदिल कोहली को। 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर आज पहले बल्लेबाजी की थी वेरी स्टार्स गांधरबल की टीम ने, और केवल 163 रन इस टीम ने बनाए थे। लेकिन मुजीबुल हक, आज मैं वीडियो तो नहीं बना सकता हूं क्योंकि आज काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन अगर मैं आज वीडियो बनाता किसी खिलाड़ी के लिए तो वो मुजीबुल हक ही होते, क्योंकि आज उस खिलाड़ी ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है अपनी टेक्निक, प्रॉपर टेक्निक के साथ। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों से वेली स्टार्स की टीम को निकाला था और एक 51 रनों की पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम को यहां तक पहुंचा दिया था, 163 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी इरफानुल हक। पहले दौर में जो गेंदबाजी देखने को मिली थी, जिस रफ्तार के साथ पहले दौर में उन्होंने गेंदबाजी की थी ना, थोड़े अब जो उनकी रफ्तार है वो थोड़ी कम हुई है तीसरे ओवर में, क्योंकि तेज गेंदबाज के लिए हमेशा आसान रहता नहीं है लगातार तीसरा ओवर करना और उसी पेस के साथ गेंदबाजी करना, वो आसान रहता नहीं है। लेकिन कप्तान उन्हीं के ऊपर विश्वास जताए हैं और नई गेंद के साथ अभी तक काफी ज्यादा इंप्रेस किया है इरफानुल हक ने। और परवेज रसूल, वो कहते हैं ना कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के क्रिकेट का ताज इस वक्त बल्लेबाजी कर रहा है, और ये खिलाड़ी अगर एक छोर पकड़कर यहाँ पर बल्लेबाजी करने लगा तो इस खिलाड़ी को रोकना बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस बार ये गेंद गैप में गई है, ड्राइव करना चाह रहे थे, बल्ले का बाहरी सिरा लगा है और गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। रन्स आने चाहिए, रन्स T20 में हम कहते हैं कि रन्स आने चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से आ जाए। ये देखिए ड्राइव करना चाह रहे थे, गेंद गई है गली क्षेत्र में और 4 रन यहां पर मिलेंगे परवेज रसूल और कंवल टाइगर्स की टीम को। इस ओवर में हल्के से महंगे साबित हो चुके हैं इरफानुल हक। कभी कभी गति आपकी दोस्त भी बन जाती है और कभी कभी दुश्मन भी बन जाती है, और यहाँ पर हल्का सा सिरा लगा था और 4 रन यहाँ पर मिलते हुए 2 चौके इस ओवर में मिल चुके हैं, और जो दबाव पूरी तरह से कंवल टाइगर्स के ऊपर बन रहा था वो हल्का सा कम हुआ इस ओवर में। ये शॉट भी अच्छा खेला है, कलाविंग के सहारे गेंद को स्क्वायर की ओर धकेल दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद केवल 1 रन। और अभी जहां पर इस ओवर से पहले लग रहा था कि बहुत ज्यादा मुश्किल कंडीशंस है, बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल है, और लगातार हम यहाँ पर कह रहे थे कि जैसे जैसे कारपेट के सहारे ये गेंद जाएगी, जितनी ये गेंद गीली हो जाएगी उतना आसान रहेगा यहाँ पर बल्लेबाजी करना, क्योंकि ओस के कारण ये गेंद थोड़ा सा और गीली हो जाएगा और ग्रिप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो चीजें हम इसके बाद भी देखेंगे, स्पिनर्स का जो रोल होगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि आसान रहेगा नहीं इन परिस्थितियों में गेंदबाजी करना स्पिनर्स के लिए। इस बार विकेट छोड़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी आदिल ने, जरूरत थी नहीं और गेंद सीधे जाकर डंडे पर लगी और तीसरी सफलता मिल चुकी है इरफानुल हक को। Another wicket down, and it's Adil Hussain who is taking a long walk back to the pavilion. Irfanul Haq striking again with a new ball. Third wicket for Irfanul Haq. Not at all. Adil Hussain was just trying to hit it big without even looking at the ball. Irfanul Haq, third one for him, and Parvez Rasool is not happy with his fellow batsman. It's the fourth one down. Kanwal Tigers, they are in some serious trouble here, and out comes Vikar Javed at number 6. Vikar Javed, Dr. Vikar. They need to build a partnership from here because they are in very trouble. I feel so. A partnership was building, but there was no need to play that kind of stroke from Adil Hussain. He was trying to heave it big on the onside, missing the line of the ball completely. And the bowler there, Irfan Mir, too accurate with his line and length. Kanwal Tigers Cricket Club, are they losing their spark? Are they losing their cool in this run chase of 163 runs? Parvez Rasool is still there. Vikar Javed, the new man in.
5 overs done, 32 for 4. Kanwal Tigers in all sorts of problems. Who would have thought at 162 while batting second under lights, 2 comes on. Would be difficult, but it is proving to be difficult because Irfanul Haq has been quite devastating with the ball in hands. Deep point on the boundary for Parvez Rasool. This is the final over of the power play. Drives down the ground, elegant. Protection down. Will restrict the batters to just 1. And the previous shot that was played in the previous over on the final delivery of Irfanul Haq's over, that was a nothing shot. Slower delivery, keeping low. He's trying to give himself room. In the end, found himself going nowhere and he was castled. Opening the bat face, guiding it in front of the fielder coming from the point boundary. Will be just 1 more. So runs coming in singles at this stage. They need a partnership because they are chasing 162. And Parvez Rasool has done it on so many occasions. And this is another occasion for him to bail his team out of the trouble they are in. Square driven onto the offside. That's why there is a point boundary, because Parvez Rasool is quite strong with that cut shot of the back foot and the square drive. And this is good leadership quality from Irfanul Haq. He spotted him. He straight away sent a fielder on the deep point boundary. Sahil Khan has picked up a wicket. He has bowled well in his 3rd over, 1 for 12. Viqar Javed has to be quite wary of the fact that Kanwal Tigers batters have played rash shots. Irfanul Haq does have that pace and bounce. The shots that were executed by the batters of Kanwal Tigers, they were all reckless shots, and that's why they found themselves in 36 for the loss of 4 wickets. Final ball of the power play. Parvez Rasool is on strike. And he has latched onto that. That has gone many a mile. Flat over square leg. A 6. Half tracker and put away. You can't bowl this to the likes of Parvez Rasool. Picked up the length early. Deposited over front of square and picked up that important maximum to finish that over on a high. It wasn't that short, but the way he picked that length out of that was remarkable. Gorgeous shot from a man who is in some fine form nowadays. 14 of 9. Chasing 163. The power play, it has been 42 for 4. To some extent, it has been the power play of the opposite team, who scored just 162 and defending. Spin, left arm spin, introduced into the attack. We will see Nadeem Dar bowling as well from the other end, long on. Long off, deep mid-wicket, deep backward square. Fine leg has been asked to go from that position to a short mid-wicket. There is a catching extra cover, and a point on the edge of the circle. This is good strategy. Shy at the non-striker's end. Does not hit the stumps. Viqar Javed so far has done well. The intent has been clear to give that single to Parvez Rasool to handle what he has been handling for quite some time now.
Javed, left arm spin. Javed Jaddu has been off color in previous couple of years with the ball. He was a go-to bowler for any captain for which he played in the gap, but cannot beat that fielder coming from the wideish long on boundary. Those pockets on the onside and offside are longer boundaries, and any batter who tries to pick those fielders has to be quite sure to clear the fielder with ease, or else he will land the balls in the safe hands of the fielders there, because there are two of them. Javed Tuvekar comes forward and he is just reading him from the hand. That's a good sign. Under lights, spinner bowling, the towels are out because the seam becomes heavier and heavier once it goes into that outfield, and it becomes very difficult for the spinners to handle. But so far, the two hasn't had any negative effect on the bowlers of VSG because they have picked up wickets. Another single. Singles won't matter at all because Nadeem Dar is smiling at the moment. He knows that the backs are onto the wall for Kanwal Tigers. They need a partnership. And if they pick up Parvez Rasool's wicket here, the end will be open. The floodgates will open. And Kanwal Tigers, as we have seen, they're quite vulnerable in those chases. And the man who is in between that definitely is the man on your screens right now. 15 of just 10. Out of the crease. Middle of the bat. Has it gone all the way? We'll wait for the umpire's signal. Yes, it has gone all the way for a maximum. Not an easy shot to play, but he knew what he was doing. Stepped out, took it on the full, bang over extra cover, flat onto the Toblerone, and gets that maximum. Beautiful shot. Lands onto the Toblerone on the full, and this is one of the gorgeous cricket shots that a batter plays. Not easy, but once a batter executes that, it's a treat to watch. Comes forward. He is an artist with the bat in hands. Parvez Rasool, 7 done. It's 51 for 4. सात ओवर की समाप्ति 51 रन्स बोर्ड पे 4 विकेट के नुकसान पे कंवल टाइगर्स, लेकिन परवेज रसूल एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हुए 21 रन बनाए हैं 12 गेंदों पे, और विकार जावेद को बखूबी साथ देना पड़ेगा परवेज रसूल का। यहां से अभी भी 112 रन्स की दरकार है 13 ओवर्स में। यहां से 20-25 रन्स की पार्टनरशिप तो लगनी चाहिए। जब पार्टनरशिप बनेगी तभी आपके लिए चीजें जो है काफी आसान हो जाएगी। Tazim Tak, for the first time in this game, has been introduced from the other end. Another left-arm orthodox bowler into the attack. Tazim Tak. विकार जावेद स्ट्राइक पे होंगे तज़ीम टाक के सामने, और एक अच्छा मूव कैप्टन नदीम डार से, क्योंकि तज़ीम ने काफी करीबी से देखा होगा परवेज रसूल को। एक ही जगह से दोनों हेल करते हैं तो एक दूसरे का गेम प्ले बिल्कुल बखूबी जानते होंगे, और उस चीज का फायदा मिल सकता है तज़ीम टाक को या परवेज रसूल को। विकार जावेद स्ट्राइक पे तज़ीम के सामने। तज़ीम का वो अनऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ एक्शन, लेकिन काफी खूबसूरत गेंदबाज है और स्किलफुल गेंदबाज है तज़ीम। यहां पे अगर एक और विकेट गिरती है कंवल टाइगर्स की तो कहीं ना कहीं बहुत ही खराब सिचुएशन में फंस जाएगी, लेकिन यहां से पार्टनरशिप ढूंढ रहे होंगे दोनों बल्लेबाज। 30-35 रन की पार्टनरशिप। रेस्ट वर्क ऑन साइड की जानिब 1 रन जरूर मिलेगा। परवेज रसूल स्ट्राइक पे। I was watching him. He was bowling somewhere, and he looks to me a left-handed Parvez Rasool because the action
And the way he unloads that delivery is quite akin to Parvez Rasool, and he will be now up against the master. This will be an interesting battle. Tazim Tak grabbing those towels, trying to keep that seam dry. Bad ball onto the leg stump, gets away with that somehow, and the batter now will come back for two. Those were easy pickings there. All he had to do, get a little bit of bat onto that. He didn't get any, and those are wides signaled by the umpire. And the fielder does well as well, because this heavy ball in the outfield can be quite dangerous to handle. The fielders might slip as well. This outfield has been lightning quick here at Bakshi Stadium. Jammu Kashmir Premier League edition 3rd. This is match number 1. Tazim to Parvez Rasool, just guiding the ball, using the pace, not trying to play those audacious shots, because he knows that the time spent out there in the middle, those runs and those boundaries and those big overs will definitely follow. This is the 8th over. 163 to win. This is OS Baba being belted for those sixes and boundaries in his first over, and then coming back, picking up wickets at regular intervals. Went almost for 50 runs in his 4 overs, but picked up 3 important wickets. And that's why Valley Stars Ganderbal ended up with a decent looking 162, but under lights with the 2 on, 162 was not looking to be a safe total. But now rocks back onto the back foot, finds the fielder Nasir Kumar. Somehow feels that one gingerly. That was hit quite hard. Middle of the bat. And Parvez Rasool is judging lengths quite perfectly. Not playing that across the line which he was trying to play a couple of years ago when I saw him at Bijbehara. But he has changed his game completely. In the gap, cannot be a single this time. Sent back by Parvez Rasool. 8 done. It's 58 for 4, chasing 163. Well, this partnership needs to be doing wonders for their team. This partnership needs to stretch past over number 12 or over number 13. And they should score at a healthy run rate as well, because the run rate at this stage is a shade above 7. Required rate is 8.7 at this stage. Well, it's well under control, but all they have to do is to keep those wickets intact. Javed Jadoo returns with his second. Parvez Rasool surveying the field on the onside, a deep square leg on the boundary, deep mid wicket, and every fielder is trying to just dry those hands. This has gone in the gap like a rocket. That one sped across the turf into the boundary for 4. Beautiful cricket shot, picking the length early once more. Weight transferred on the back foot, and that swivel coming out to fetch another boundary for Parvez Rasool. You can't drop that shot to Parvez Rasool because he is quite severe on that short ball. And he likes to pull and hook. Long on, long off. Javed Jadoo. This time flights, comes out of the crease, drives, finds Nadeem Dar, no run. Bakshi Stadium draped in those magnificent floodlights. It looks like 12 p.m. during the day, but
The time is 27 minutes past 12 in the night. Better shot in the V. Should he come back for two? They are rushing back for two. Not a good throw. Not at the right end as well. And Javed Jadoo is not impressed. Rightly so, because the throw needed to go at the striker's end, because Parvez Rasool was ambling away towards that end. And had the throw gone to that end, it would have made him hurry, and there would have been a chance. But that chance goes a begging. 2 runs accruing on that delivery. Nasir Kumar has gone out. I don't know for what reason, and the game has been delayed for a second. None for 13 in his second over. Parvez Rasool is playing yet another important innings. 27 of 16. They need exactly 101 from the remaining 11.4 overs. They're checking if that run was taken. Has he grounded the bat past that popping crease? I think he has. Or is the bat on the line? The third umpire needs to have a look. He's looking at it. And the decision has been given that the bat was on the line. So 1 run will be deducted from those couple of runs. But it looks touch and go. And the umpire has decided against Parvez Rasool on that occasion. Good delivery in that block hole. Ball slower through the air. And Parvez Rasool carves it away onto the offside. Long on and long off, waiting for any opportunity. But Parvez Rasool so far has played street smart cricket. He's played cricketing shots. He knows that he has a job on his hands. In the air, short of the fielder who was swooping on the ball. Heart in the mouth stuff. Parvez Rasool gets away with one. Had that ball gone straight to the fielder, it would have been a disaster for Kanwal Tigers team. But fortune favors the brave, as they say. Vikas Javed is on strike now. Final delivery of the 9th. This game is even Stevens at this stage. Ganderbal, they need a wicket. Kanwal Tigers need a partnership. Vikas Javed has been quite clear with his approach so far. Finishes the over with a dot. It's 64 for 4, Kanwal Tigers. They now need 99 from remaining 11 overs. पार्टनरशिप तो यहाँ पे बिल्कुल जो है बिल्ड हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिक्वायर्ड रन रेट का जो मसला है उसको भी दिमाग में जरूरी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रन रेट 10-11 रन से ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं फिर आप वो बड़े शॉट्स की तरफ जाएंगे। और आपने विकेट्स गवाई है, 4 विकेट्स गवाई है, और वो आखिरी शॉट जो परवेज रसूल ने खेला था, जुनैद बशीर का एक जबरदस्त एफर्ट, और अगर ये कैच पकड़ा जाता तो कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किलात में फंस जाती कंवल टाइगर्स। जुनैद बशीर अक्सर मैं देखता हूं सोशल मीडिया पे, ये बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग करता है ये लड़का, और आज भी ऐसे ही कुछ एफर्ट्स देता हुआ अपनी टीम के लिए। ड्राइव किया इस बार, खूबसूरत शॉट, 2 रन की मांग जरूर होगी, लेकिन इस बार परवेज रसूल ने मना किया। हालांकि आधे रास्ते तक पहुंच गए थे डॉक्टर विकार जावेद का प्लान बिल्कुल जैसा इरशाद भाई ने कहा क्लियर है। अभी ज्यादातर स्ट्राइक पे परवेज रसूल को ही लाना है, क्योंकि वो अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं। 30 रन बना चुके हैं अभी तक, 65 ही टोटल बने हैं, लेकिन यहां से अब वो डॉट बॉल परसेंटेज जो है उसको कम करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ेगी और गलत गेंदों पे आपको टूटना पड़ेगा, तभी वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो आपके कंट्रोल में रहेगा। ये डॉट बॉल्स जितना यहां पे आप खेलोगे उतना प्रेशर परवेज रसूल पे आएगा, उतना प्रेशर उतना प्रॉब्लम्स आपके लिए खुद भी क्रिएट हो सकता है। विकार जावेद 11 गेंदें खेल चुके हैं, केवल 6 रन,
और एक प्रेशर रिलीजिंग शॉट चाहिए यहां से, क्योंकि रन्स थोड़े से सूख गए यहां पे। इस बार ऑन साइड की जानिब खेला है, 1 रन के साथ फिर से परवेज रसूल को स्ट्राइक पे लाएंगे। अभी तक खामोश ही है विकार जावेद, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 12 गेंदें खेल चुके हैं, केवल 7 रन उनके बल्ले से। परवेज रसूल के साथ साथ किसी दूसरे बैट्समैन को स्टेप अप करना पड़ेगा और यहां पे कुछ शॉट्स खेलने पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद आपके पास सिर्फ 10 ओवर बचते हैं और वो भी करीबन 100 के आसपास आपको रन बनाने पड़ेंगे। देखिए ड्यू जो है बिल्कुल ड्यू है, वो बार बार जो गेंद को है टॉवेल से साफ कर रहे हैं, आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अंडरलाइट जब आपको रन चेज करने होते हैं तब आपको ड्यू का फायदा उठाना पड़ता है एज अ बैट्समैन, वहां पे कहीं ना कहीं चूक हो रही है विकार जावेद से। लेकिन परवेज रसूल अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहे हैं कंवल टाइगर्स के लिए। और जो अर्ली विकेट्स दिलाए इरफानुल हक ने वैली स्टार्स गांदरबल को, उससे काफी झटका लगा कंवल टाइगर्स को। यहीं पे अगर 2 ही विकेट्स गिर चुके होते तो कहीं ना कहीं बड़े शॉट्स की तरफ जा सकते थे परवेज रसूल, लेकिन अभी वो डिलेमा में है, क्योंकि 4 विकेट्स आपने गंवाई है। आपको गेंदबाजों को मेरिट के हिसाब से खेलना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको ये चीज भी दिमाग में रखनी है कि मेरा विकेट नहीं जाना चाहिए। 2 गेंदें बची हुई इस ओवर की। डॉक्टर विकार स्ट्राइक पे, इस बार भी डॉट गेंद। ये डॉट बॉल जो है काफी परेशान कर रहे हैं कंवल टाइगर्स की इस रन चेस को। एक आखिरी गेंद बची है इस ओवर में। तहजीम टाक ने 2 ओवर्स बहुत ही सस्ते में निकाल दिए हैं, केवल 10 रन खर्च किए हैं। हालांकि विकेट नहीं मिला है उनको, लेकिन ये जो स्पेल रहा है उनका पहला, मेरा मानना कहीं ना कहीं टॉप नॉच स्पेल तहजीम टाक का, और सस्ता ही निकल जाएगा। केवल 10 रन 2 ओवर से 10 ओवर की समाप्ति के बाद 67 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स कंवल टाइगर्स। These dot balls will put that extra pressure on Parvez Rasool, and he will be quite keen to play those big shots, and then he has that chance of losing his wicket. So Vicar Javed has to step up. 14 deliveries so far chewed up for only 7 runs. Halfway mark, 67 for 4. And right now, Valley Star Ganderbal's, they might think that they're slightly ahead of Kanwal Tigers at this stage. 96 more runs. The required run rate has jumped up to 9.5. More than 9.5. And Vicar Javed, he needs to be clear in his mind that he has to play aggressive brand of cricket from now onwards, because he has to get some quick runs. Otherwise, he's not helping the cause of Kanwal Tigers, because it can't be a one-man show. Cricket has to be won in partnerships, and that partnership needs to be putting runs on the board now. Javed Jaddu, 2 overs, none for 15. And both the spinners, the left-arm spinners, have bowled well. Haven't given away too many boundaries. And this will be quite interesting this over, because Parvez Rasool would definitely like to cash in. Cuts, the favourite stroke. But there is man back on the boundary exactly for that shot. Extra cover, cover point, and a long off, sweeping on the offside. Square leg behind square leg umpire on the boundary, mid wicket and a long on. Plenty of protection for the left arm spinner. Shout for LBW, up goes the finger, and Vicar Javed has to leave. Wicket number 5, half of the side back to the hut now, and Kanwal Tigers in all sorts of problems. Played back on that delivery.
Ankush Bandral replaces Vikar Javed. Ankush Bandral has that experience and the runs to back it up. Healthy strike rate in excess of 130s. He's taking guard, left-hander, left-arm spinner. This would have been a positive matchup for Kanwal Tigers had he been sent earlier. Because shorter boundaries, leg side. The ball will be turning into him and that will give him an opportunity to go for some quick runs and hit some boundaries in front of that square on the onside and on the offside as well, because the square boundaries, they're quite shorter. Javed Jadoo, but he has bowled well. Whips it off the stumps. Fielder from long on comes into play, and it will be now Parvez Rasool. This over 2 has gone without any boundaries so far. So the boundaries have dried up completely due to some exceptional fielding as well from VSG fielders. And this game is on the knife's edge right now. A partnership here and there and a wicket, particularly the wicket of Parvez Rasool at this stage, will seal the deal for both the teams. Next ball. Pulls, hammers it and hammers it in front of square for 4. Momentarily, I thought that the fielder coming from long on and one coming from square leg had a chance, and he bisected both of them with some amount of precision. Look at that. Rocks back onto the back foot, boy. Thumped away for 4. Parvez Rasool is playing yet another important innings for his side. And once again leading from the front. Wickets with the ball. The fielding was brilliant and now trying to sweep. Shout, given out, LBW. Javed Jadoo strike scored. एक उम्मीद जो थी कंवल टाइगर्स के पास अब वो भी खत्म हो चुकी है परवेज रसूल के उस विकेट के साथ। एक बाउंड्री जरूर लगाई थी लेकिन उसके बाद स्वीप करने का प्रयास
और LBW करार दिए गए परवेज रसूल। लेकिन एक चीज मेरी सोच से परे, जब आप वो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन के साथ आगे जा रहे थे, जब एक राइट हैंडेड बैट्समैन के आउट होने के बाद एक राइट हैंडेड बैट्समैन को आना था, वहां पे परवेज रसूल ऑलरेडी खेल रहे थे। वहां पे जब एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आउट हो गया था, उसके बाद मेरा An over before, because once Parvez Rasool got dismissed, the floodgates were open. That's exactly what was bound to happen. He was trying to heave it across the line, a straighter delivery. You miss, I hit. Wicket number 7. Taizim Tak is among us the wickets. And this innings of Kanwal Tigers is folding up quite dramatically now after the fall of Parvez Rasool's wicket. He was the only batter who was stroking the ball with some sort of authority. The rest of the batters got perished. Once you're batting on a wicket which is full of runs, the balls come onto the bat quite nicely. And the two should have helped your cause, but it has been a complete opposite so far. Barring Parvez Rasool, none of the batters have been able to step up to the occasion. That's why they find themselves at 77 for 7 in the 12th over. Valley Stars Ganderbal should look to wrap this up quite quickly and win the first match of JKPL Season 3. Tazim to the new batter, who's a left-hander, almost gets another one past the outside edge. This has been some brilliant bowling. Zishan Zahoor is the man, getting the taste of his own medicine. Nudges it away onto the onside, picks up a single, and the score steadily from 77 to 78 for 7. Wajahat and Zishan. This is the 12th over. Zishan Zahoor can hit some lusty blows, because I have seen him hitting those big sixes and those boundaries. But how well have these two spinners bowled in tandem? Taizim Tak is in his 3rd over. He's given away just 11. Javed Jadoo too has been quite economical. Once again a dot ball. This has been some spell from Taizim Tak.
3 overs, 1 for 15. It's 78 for 7 from 12. They are in deep waters at this stage. Kanwal Tigers chasing 163, which looks a quite tall order right now. They need a partnership and they need a cameo from somewhere to lift their spirits. Bowling change. It looks like Nadeem Dar has introduced himself into the attack, and it will be further problems for the two new batters out there in the middle. इरशाद भाई, जब एक टीम का पहला मैच होता है किसी भी टूर्नामेंट में, considering the fact that JKPL is the most prestigious tournament of the valley as well, और जब इस तरीके का स्टार्ट होता है किसी टीम के कैंपेन का, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है. हालांकि गेम आपके फेवर में था, आपको सिर्फ 163 रन चाहिए थे अंडर लाइट्स, चेज कंडीशंस आपके फेवर में, लेकिन आप वो उम्मीद जो होती है उस पर खरे नहीं उतर पाए. कहीं ना कहीं आपने खराब क्रिकेट खेला है. हालांकि गेंदबाजी भी बहुत अच्छी हुई है पावर प्ले में. इरफानुल हक की अगर हम बात करें, गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त की है इरफानुल हक ने, लेकिन आपने खराब क्रिकेट खेला है, आपको वो चीज भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. और कंवल टाइगर्स क्रिकेट क्लब स्टार्ट अच्छा नहीं रहा है उनके इस कैंपेन का. उम्मीद पे दुनिया कायम है. जीशान जहूर है वहां पे क्रीज पे, वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन नदीम डार जो है कैप्टन इस टीम के, वो भी एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है, काफी चतुर चालाक गेंदबाज है. यहां पे एक और विकेट मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं ये तो गेम फिनिश है, क्योंकि जीशान जहूर ही ऐसे बैट्समैन लग रहे हैं जो बड़े शॉट खेल सकते हैं कुछ इस प्रकार से. लेकिन सीधे गई है गेंद खिलाड़ी के हाथ में. इस पारी ने दम तोड़ा है लॉन्ग ऑन पे, और इसी के साथ जो आखिरी उम्मीद थी कंवल टाइगर्स की, वो भी वापस जाती हुई. This is what exactly happens when you try to bowl, when you try to go after 163. You have to play those rash shots, and this is exactly what happened to Zishan Zahoor. Those pocket boundaries are quite longer, and to clear them, and he need to get some power behind the shot. There was no power behind the shot, and as a result, he perished. Wicket number 8. Wicket number 8 for Valley Star Ganderbal, and Zishan Zahoor has to walk back. It was a drop down, not able to latch onto that the way he would have liked. Straight down the throat of the fielder at wideish long on. Takes it with Klee, and further problems for Kanwal Tigers. And their side is a very happy side. The captain looks content. Everybody looks quite satisfied, because once they scored 162, there was that belief that they will make a match out of that, and boy, haven't they made a match out of that, and they are now on the brink of a win, a huge win at the start of this tournament, JKPL Season 3. They need just 2 wickets to wrap this up and register a comprehensive win. New man in is Umar Farooq. Picks up a single down the ground. They need a heroic effort at this stage. It's someone to get a cameo of 30 to 40 runs to infuse life into this innings, which has started and stopped. At times, when Parvez Rasool was going, he was trying to stitch in partnerships with his fellow teammates, but none was able to step up using the pace. The boundaries have dried up completely, and that has been the hallmark of the bowling effort from VSG. They haven't given away anything easy for the batters of Kanwal Tigers, and that's why this is the stage of the game where they're
83 for 8, chasing 163. Irfanul Haq has been the pick of the bowlers, 3 for 23, with Javed Jaddu picking up a couple as well. Nadeem Dar and Tazim Tak picking up one apiece. 42-80 is the equation. They've just 2 wickets in the bank. That's the real cause of concern. The beautiful city of Srinagar is draped in dark, but this stadium is well lit, illuminated by those towering, magnificent floodlights. It is worth a look. Mujibul Haq fielding on the boundary at deep backward square. A slight change in the field. Mujibul Haq's innings of 50 plus was instrumental in lifting the spirits of Valley Stars Ganderbal, and that's why the reason they scored 162. And that innings of Nadeem Butt as well. I haven't seen him bowl, Nadeem Butt. They've got a plethora of spinners for their side. It's 4 minutes to 1 a.m. in the morning. We haven't completed this match yet. It was a belated start here at Bakshi Stadium, Srinagar, the opening match of JKPL Season 3. And this has been a dismal show with a bat from Kanwal Tigers batters. The bowling was somewhere okay, but the batters have let them down. And how well have VSG bowlers, particularly Irfanul Haq and the 2 spinners, so far bowled in this innings. Nadeem Dar too joining the party with that 1 wicket in the previous over. It looks like a dead rubber at this stage. It looks done and dusted for Kanwal Tigers. Just the last rights in this match. 2 more wickets. The giant screen towards our right. Bakshi Stadium is draped in that violet light. Looks a crown of artificial stars covering the ground. And it looks daylight right now. But if you just extend that look beyond the boundaries, it's completely dark. Out of the crease, in the air, fielder there, should look to cut it off, does cut it off. The fielding has been quite remarkable. The ground fielding and the catching has been brilliant. 14 overs done. Kanwal Tigers are 86 for 8. Athwas Retail, in partnership with Athwas Hyundai, presents Jammu Kashmir Premier League Season 3. And the venue is going to be Bakshi Stadium, Srinagar, for every match using the pace. Glides it down to short third. Will be just the single. So singles won't matter at all. Wajahat and Umair Farooq are the 2 batters. Target is 163. That's a lovely shot. Forced up the back foot and finds the boundary. No chance for Irfanul Haq, who was at cover. Almost got to the ball. But then it was struck so hard. Whistles away past him into the boundary for 4. They need these shots in abundance.
Times it well, finds the fielder yet again inside the ring on the onside. So apart from Parvez Rasool, none of the batters have been able to hit those gaps, and now Wajat is looking like a pretty decent batter. So far, he has struck everything from the middle of that bat. 8 of 9, Wajat has a word with young Umar Farooq, father of Farooq Amin. Ball round the legs, trying to sweep. The ball snuck through, and the stumps have been disturbed. Wicket number 9, 15 overs done. Kanwal Tigers on the brink of a huge defeat in the first match of JKPL Season 3. And Farooq Amin's son, Umar Farooq, has been dismissed. He's gone for just one. Nadeem Dar picks up another wicket, silently walks back, taking that wicket, sinking that in, and Nadeem Dar, 2 for 11 from his 2, is a wily customer with the bat. Slower through the air, knew that the batter will be down on his haunches to sweep, misses, snuck through, and wicket number 9 for Team VSG. OS Baba, the final man walking down with a bat in hands. Him and Wajat now, they should look to bat those 5 overs. We're already 1:01 in the morning. This match started on the 22nd of August. We're into the 23rd of August already. We're yet to complete this match. Here is Javed Jadoo. Comes forward, middle of the bat, nudge down the ground. Wajat has been a decent batter. But you can't send everybody out there. Everybody has a role to play in the team. But the role of the batters that was due for the batters of Kanwal Tigers haven't been fulfilled. Minus that innings from Parvez Rasool, and he scored those 35 valuable runs. Javed Jadoo to OS Baba. He comes forward. It's a dot ball. 16th over, and after that, 4 more overs to come. Just 1 wicket away of the Valley Star Ganderbal. Will this be the final over of the innings? And at the dot ball, we can crush it. Two dot balls in this over, a single of the very first ball. Is there a big hit coming? OS Baba. No. OS Baba is playing defensively. There's only one reason for that, because Wajat has told him to be there for him. Because Wajat wants to have a crack with the bat in hands. Wants to hit a couple of lofty blows. Something in the middle of the pitch that's bothering the umpires. Looks like a bat from here. Has been flown off, and now everything in readiness. Javed Jadoo to OS Baba, and nurdles it away onto the onside for 1. And now he's coming back for 2 empty spaces. Easy 2. Takes the total to 95 for 9. This isn't a performance that was expected from Kanwal Tigers, because they had some decent batters up their sleeve. But it was a pretty dismal show. The bowlers did an okay job. The batters disappointed.
down the leg side will be called a wide. Takes the total to 96 now. Final ball of the innings. The conditions were in favor of Kanwal Tigers, but they disappointed with the bat. They were not able to take advantage of those conditions, and as a result they perished, and now they find themselves after the completion of 16 at 96 for 9. पूरी तरह से कंवल टाइगर्स की टीम आज इस मुकाबले से अब मुझे लगता है कि बाहर हो चुकी है, क्योंकि आखिरी जोड़ी खेल रही है और 96 रन अभी तक इस टीम ने बनाए। काफी खराब प्रदर्शन रहा है मिडिल ऑर्डर से, टॉप ऑर्डर से। परवेज रसूल एक अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन वो भी बाद में ज्यादा देर तक बल्लेबाजी कर नहीं पाए। और अब 26 गेंदें बची और 67 रनों की ओर दरकार है इस टीम को ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। अब देखना पड़ेगा कि कितनी देर तक ये दोनों बैटर यहां से बैटिंग करेंगे, लेकिन डीप में मिसफील्ड और गेंद गई है 4 रनों के लिए। वजाहत काफी देर से बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, लेकिन यहां से अब विकेट्स भी बचाने पड़ेंगे और बड़ी शॉट्स के लिए भी जाना पड़ेगा, और तभी जाकर कंवल टाइगर्स की टीम इस मुकाबले में कहीं ना कहीं वापसी कर सकती है। शॉट अच्छा खेला था, हल्का सा रोम बनाकर गेंद को एक्स्ट्रा कवर की ओर खेलने में कामयाब हुए थे। वहां पर हल्का सा मिसफील्ड हुआ था। एक और अच्छा शॉट, लेकिन इस बार रोकने में कामयाब हुए हैं मुजीबुल हक, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाएंगे ओवैस बाबा और वजाहत को। और इस तरह से 100 रन मुकम्मल होते हुए कंवल टाइगर्स की टीम के लिए 102 रन 9 विकेटों के नुकसान पर नदीम डार 2 सफलताएं उनको मिल चुकी है। बल्लेबाजी आज अच्छी कर नहीं पाए, लेकिन गेंदबाजी हमेशा वो अच्छी करते, और आज के मैच में भी वो 2 विकेट चढ़ चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग का आज ये इनॉग्रल मुकाबला चल रहा है वेली स्टार्स गांदरबल और कंवल टाइगर्स के बीच में, जिसमें टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी चुनी थी वेली स्टार्स गांदरबल की टीम ने। और अब जाकर यहां से साफ तौर पर हमें यह लग रहा है कि क्यों उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी थी। शायद उनको पता था कि अगर हम यहाँ पर कुछ रन्स, अच्छे खासे रन्स यहाँ पर बोर्ड पे ऊपर लगाएंगे तो उसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी कंवल टाइगर्स की टीम को। और हमारे जो थर्ड अंपायर की भूमिका जो यहाँ पर अदा कर रहे हैं ना, वो मेरे दोस्त भी है और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। दानिश एक कमाल के क्रिकेटर है, जब भी बल्लेबाजी करते तो बहुत ही स्टाइलिश शॉट्स उनके बल्ले से निकलते हैं। आसिम बशीर के साथ बहुत सारे क्रिकेट वो खेल चुके हैं, और लेकिन अब जाकर जिस तरह से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा जिस तरह से यहाँ पर थर्ड अंपायरिंग अभी तक हुई है ना, वो कमाल की हुई है। और इसके पीछे जिस बंदे का हाथ है ना, खुद भी क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है दानिश, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। 103 रन 9 विकेटों के नुकसान पर 17वें ओवर की आखिरी गेंद करेंगे नदीम डार। और नदीम डार की गेंदबाजी एक अलग प्रकार की गेंदबाजी होती है। ज्यादा वो एक ही गेंद करते नहीं है, बल्कि 6 अलग गेंदें वो करते हैं। कभी तेज, कभी कभी तो लगता है कि मीडियम पेसर गेंदबाजी कर रहा है, इतनी तेज वो गेंदबाजी करते हैं। कभी बहुत ज्यादा स्लोवर गेंदबाजी वो करते हैं, और वहां पर बल्लेबाजों को ये सोचने का मौका नहीं देते कि कौन सी गेंद आएगी और किस तरह की गेंद आएगी। और अभी तक उन्होंने अपना कोटा मुकम्मल नहीं किया है। 3 ओवर 18 रन और 2 सफलताएं नदीम डार को मिल चुकी है। काफी खूबसूरत वातावरण यहाँ पर बख्शी स्टेडियम में। आज मुकाबला थोड़ा सा देरी के साथ शुरू हुआ था, क्योंकि पहला जो यहाँ पर एक मुकाबला चल रहा था, उसके बाद हमें ये देरी के साथ मुकाबला शुरू करना पड़ा। छह 6.18 की औसत से रन्स कंवल टाइगर्स की टीम ने बनाया, और 18 गेंदें 58 रन। यहां से तो मुझे लगता है कि जो संदेशा ऊपर से आया है कि वो यही आया होगा कि पूरी 18 गेंदें हमें खेलनी है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का ये पहला मुकाबला चल रहा है। और अगर यहां से ऑल आउट होती है कंवल टाइगर्स की टीम, तो रन रेट का जो
मसला है ना वो बाद में आ जाता है, क्योंकि अगर इनकी नेट रन रेट नीचे आएगी तो बाद में क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दानिश भाई हमें दे रहे हैं, लेकिन यहां से मैं जो कह रहा था कि कंवल टाइगर्स की टीम चाहेगी कि यहां से ऑल आउट नहीं होना है, क्योंकि अगर वो ऑल आउट हो जाएंगे उसके बाद शायद वो माइनस में भी जा सकते हैं, और उसके आखिर में हम देखते हैं कि जब क्वालिफिकेशन मतलब आपको आगे जाना होता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें देखी जाती है। इस बार गेंद ऊपर गई है, एक और सफलता यहां पर मिल सकती है इरफानुल हक को, और इस तरह से कंवल टाइगर्स की टीम 105 रन बनाकर ऑल आउट हुई है, और केवल 17.1 ओवर के बाद यह टीम ऑल आउट हुई है। और इस तरह से रॉयल स्टार्स गांदरबल की टीम ने इस पहले मुकाबले को अपने नाम किया है। जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग का पहला मुकाबला रॉयल स्टार्स गांदरबल की टीम ने अपने नाम किया। 163 रन बनाए थे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी, क्योंकि ओस काफी ज्यादा आई थी और हमने कहा था कि गेंदबाजों के लिए मदद ज्यादा रहेगी नहीं, क्योंकि गेंद थोड़ा सा गीला हो जाएगा। लेकिन रॉयल स्टार्स गांदरबल के स्टार खिलाड़ी इरफानुल हक ने जिस तरह से नई गेंद का इस्तेमाल किया, उस तरह से उसके बाद जावेद जड्डू ने जिस तरह की गेंदबाजी की वो काबिल तारीफ है, और यही वजह है कि रॉयल स्टार्स गांदरबल की टीम को जम्मू कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में जीत हासिल हुई है, और एक बहुत बड़ी जीत उनको हासिल हुई है। कल एक बार फिर से दिन के पहले मुकाबले में आपके साथ जुड़ेंगे, जो कि रॉयल गुडविल और सैक डाउनटाउन के बीच में खेला जाना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह।